Rintuji, are you with us? Okay, since there is Rintuji, shall I start the attendance or shall I wait for others to join in? You can start the attendance. Okay. I'm not able to hear you, Rintuji. Am I audible now? Yes. I'm saying that you can start taking attendance, and those who will be joining late, you can check it out in the participant list later on. And Sure. they have to complete the LMS part. You can discuss the LMS till what they have completed. Sure. So currently it is 9:30. Till what time are we supposed to do the LMS thing? It is there in the session plan. Session Right? plan. I just open it. Okay. Thank you so much, Rintuji. Yeah. Okay, friends. So let's begin with the attendance first, and then we'll have to complete the attendance part, and post the attendance part, we'll do the session, this LMS thing, and post that we'll start our session. Okay. So please say present or absent by your names. Okay. As in when your name is called, please say present and be slightly louder. Okay. Because I am on a separate screen. I cannot see the chats or your hands raised. So you have to say present. Okay. Jitendra Kumar Singh. Jitendra Singh. Nitish Kumar. Yes, ma'am, present. Thank you, Nitish. Rajesh Paswan. Present, ma'am. Thank you. Sushant Acharya. Yes, ma'am. Good morning, present. Good morning. Juhi Gupta. Raju Kumar. Present, ma'am. Rocky Gupta. Present, ma'am. Nitesh Kumar. Ankur Mili. Yes, ma'am. Nitish Present, ma'am. 397850, ma'am. Yes, I have marked you present, Nitish and Nitesh Yes, both. thank you, ma'am. No, I guess Nitesh Kumar is absent. Nitish Kumar is present. Okay, so Zil Yogesh Bhai. Present, ma'am. Ankur is Suman Sarkar. Good morning, ma'am. Present. Good morning. Vivek Singh. good morning, ma'am. Present, ma'am. Senthil Su. Present. Adinayak Singh. Mitesh Parekh. Vrindavan Mohanty. Good morning, ma'am. I'm here. Good morning. Indrajit Roy. Present. Arindam Roy. Present, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Surekant Jaina. Yes, madam. Present. Good morning. Good morning. Soumya Sinha. Nikhil Ghosh. Yes, ma'am. Good morning. Present. Good morning. Manoj Kumar. Present, ma'am. Preeti Agarwal. Present, ma'am. Kripal Dikshit. Good morning, ma'am. Gopal present. Good morning. Aditya Kumar. Present, ma'am. Ritika Khimani. Present, ma'am. Dhaval Tigar. Present, ma'am. Vinod Gurang. Priyanka Mukherjee. Yes, ma'am. Good morning. Present. Good morning. Amit Kumar Datta. Good morning, ma'am. Good morning. Dashrath Prajapati. Yeah, good morning, ma'am. Hello. Present. Good morning. Nishant Verma. Okay. So we are done with the attendance for today. Let me just save this file. Okay.
Right. So today we have, you have to complete your LMS till 10, and then we will start doing our today's session, which is about how to make cold calls. Okay. In person, on telephone, how to get appointments is the topic for today. So first we will. Good morning, ma'am. have I'm to- sorry, Yeah. ma'am. I'm Nitesh. Yes, tell me. मैम मेरा अटेंडेंस नहीं हुआ इसलिए मैं आपको अच्छा, आपका पूरा नाम नीतीश बताएंगे कुमार, ma'am. प्लीज? नितेश कुमार. Okay, नीतीश मैं कुमार. just- Yes, ma'am. नीतेश कुमार. ओके नीतेश जी, मैं प्रेजेंट कर देती हूँ आपको. अच्छा, फॉर एवरीवन नाउ यू विल हैव टू टेल मी व्हाट इज योर स्टेटस ऑन योर LMS thing. What is your status on your LMS thing? Have you completed your assignments? Have you not completed your assignments? If not, you will have to complete them right away. The assessment on digital banking is what you are supposed to complete. How many of you have completed and confirmed it in the group? So I can see only, please raise your hand if you have. Priyanka has completed it. Okay. How many of you have completed it? Vrindavan has completed it. Okay. Others, why have you not completed it till now? Assignment on digital banking. Please do it right away and confirm it on the group. Ma'am, it is not uploaded in LMS. It is uploaded, I think. Rintuji, is it not uploaded in LMS? I am just sending mail to Rintu sir. Please do, because I think it's uploaded. अगर प्रियंका ने किया है तो उनको मिला होगा, तभी तो किया होगा ना, because there is only one link, Zil. So I think you should check. Priyanka, where did you get the link from? Can you please guide Zil? Ma'am, I am aware about the link, but actually it is not uploaded. I have checked several times. Is it? Okay, then you mark a mail to Rintuji and ask him why is it not showing in your system. Okay, Yes, ma'am, I am others. doing this. Thank you so much, Zil. Others, why have you not done it? Please complete it soon so that we can start our next lecture. We have to complete this. अभी 9:40 हो रहा है. I give you time till 10. Please complete and confirm it in the group. Start opening the assignment, complete it and confirm it into the group. The common group which we have, you have to mark that you have done your assignment. Once everybody marks done, then only we move ahead with our further course. मतलब इस फॉरेक्स पढ़ना, फॉरेक्स का Digital wala, Forex तक तो digital करना banking होगा ना? wala. Arindam, you are speaking to me? If not, please mute your mic. Arindam and Kripal Dikshit. मैडम कृपाल। कृपल Yeah. मैम, आप कौन से मॉड्यूल की बात कर रहे हो? डिजिटल बैंकिंग का? हाँ जी, हाँ जी. मैम, इट इज नॉट शोइंग इन द LMS सेक्शन. Is it? Rintu ji, are you with us? I'll मैम, just इनवर्ट check. और इनवर्ट एमिटेंस का और उसका मॉड्यूल आ गया है और फॉरेस्ट कार्ड का आ गया है, और इसलिए वो मेरा पेंडिंग है, लेकिन ये नहीं आया डिजिटल बैंकिंग ठीक है. Okay, I'll just check with Rintu ji. Just hold on. हाँ जी रिंटू जी, सम पीपल आर सेइंग दैट उनका डिजिटल वाला दिख नहीं रहा है उसमें. आप हैं क्या हमारे साथ कॉल पे? ये डिजिटल बैंकिंग वाला LMS कंप्लीट करना है, राइट, एज पर द शेड्यूल? अच्छा, तो कौन सा वाला कंप्लीट करना है 10 बजे तक? ओके, ठीक है, थैंक यू. So friends, Nintu ji is saying that you have to complete digital wala is not yet uploaded. You have to complete उससे पहले के inward outward remittance, priority banking proposition, वो जितने भी अभी तक अपलोड हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं. डिजिटल वाला अभी अपलोड नहीं हुआ है, टैग इन नहीं हुआ है मतलब आपको. ओके Sorry? मैम. Yeah. राइट फ्रेंड्स, तो प्लीज चेक इन. आपका कोई भी असाइनमेंट रह गया तो उसको 10 बजे तक कंप्लीट कीजिए और ग्रुप पे डन लिख के डालिए.
so that we can go ahead with our class? Everyone, please complete your assignments by 10 a.m. and confirm so that we can start the class.
Hello. Yes. Hello. Yeah. Good Yes, morning, ma'am. Rajesh. Good morning. Actually, ma'am, some due to technical issue or network problem, that's again I am joined that meeting. Okay. Sorry, come back. Due to technical issue, आपने आगे क्या बोला? एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सुबह से कंटिन्यू। मैं जी वाईफाई जी। के थ्रू ज्वाइन किया था, तो मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया कि ड्यू टू नेटवर्क इशू मैं अभी एग्जाम तो कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने फिर से ओके अभी वाईफाई कनेक्ट करके मैंने अभी मीटिंग ज्वाइन किया है। ठीक है मैम, मैं देख रहा हूँ जैसे नेटवर्क मेरा ठीक होता है मैं एग्जाम दे देता हूँ। ओके ओके ठीक है। ओके ओके। बाकी सब अपना कंफर्मेशन दीजिए so that we start at 10. We have 3 minutes more to go. Please confirm once you have done, all of you.
Hello. Hello. Hello, Shilpa ma'am. Hello. Hi friends, shall we start? Are we all done with the assignments? I've been waiting. Ma'am, Are we all done with the assignments? Can you please Hello. confirm? Hello. Yes. गुड मॉर्निंग मैम, अधिनायक सिंह बोल रहा हूँ। या बोलिए। बोल रहा हूँ मैं कि डेस्कटॉप पे मेरा एक्चुअली रैम इन्हेंसमेंट हो रहा था, डेस्कटॉप में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। फोन से एक बार लॉगिन किया तो मैं अभी 20 अटेम्प्ट ही किया था, तो उसके बाद लॉग आउट हो, एक कॉल चलाया तो लॉग आउट हो गया। तो क्या मैं दोपहर में लैपटॉप डेस्कटॉप में ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं असाइनमेंट कर पाऊंगा? ठीक है, आपको रिंटू जी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। ओके, सो यू इफ यू आर नॉट एबल टू डू बाय डे एंड टुडे, प्लीज इंश्योर यू कॉन्टैक्ट रिंटू जी एंड कंप्लीट इट। ओके, नहीं, मैं ट्रेन के पहले कर लूंगा मैं। जी जी, ओके। Right friends, so if all are ready, can you all switch on your cameras and can we start the class? Yes, all cameras on and you on mute. Right, please switch on your camera so that you confirm me that you are ready for the class. I hope everybody has completed their assignments. And if not, if there is some error somewhere, if there is something which is creating a problem, if there is something which is an issue on technical side, please contact Mr. Rintu Das. He'll help you out. More or less, you have to complete this by day end today. All the pending assignments should be completed, right? So that, your coming days, you are not busy with completing your previous assignments because every day would have new assignments. Hai na? Okay, now tell me, am I audible properly? Just give me a thumbs up if I am. Yes, ma'am. Good. And tell Yes, me ma'am. whether the screen which I'm sharing is viewed properly. Is the screen properly Yes, shared? ma'am. Yes, Thank ma'am. you. Okay, ma'am. so we start the class. Welcome everyone for today's class. Last class when I met you, we all discussed calling, right? We did role plays, we did calls, we did some calls where I was a customer, and we did some calls where you were the customer, right? Today we would learn how to do cold calls, okay? In situations wherein we are not meeting our ETB customer, we are meeting our NTB customer. तो हमें किस तरह उसको पकड़ना है? How do we get an NTB customer to meet us? And after meeting an NTB customer, what are we supposed to do? What are the etiquettes to follow? What is the way to behave? What is the way to talk? What are we supposed to talk? All that we learn formally today, okay? We'll not only learn about what we have to speak, but we'll also learn about what will we be wearing when we go and meet these customers. What kind of shoes, what kind of dress, what kind of hairs, what kind of shave, what kind of lipsticks, what kind of nail polishes, everything we'll learn today. Okay, it's an important class. And whenever today, believe you me, this class would be so useful for you, not only when you're working with Axis Bank, whenever you grow in your life, when you have your bosses coming with you, the first thing which they see is, are you following the etiquettes which have been taught to you? Okay, so these banking etiquettes go lifelong with you, my dear friends. So these are not small things. They will, we'll teach you, we'll let you know what Axis Bank wants out of you in case of your grooming necessities, in case of your speaking necessities, in case of your clothing necessities, all that. Okay, so gear up, my friends. Let's start the day today. Okay, so we learn how to do cold calls, and we learn what to wear on these calls. Here we go. So today is day 5, and today we'll be learning on cold calls. Okay. So a brief recall, you have till now covered digital channels and platform. You have covered portfolio management. You have covered Forex card, inward and outward remittances, and you have covered term deposits, right?
So this is what you have covered till now. So we are today on day 5. You have covered till day 4, where you have covered your preposition, your credit cards, your current accounts, your term deposits, your Siddhi Triumph, digital channels, and Forex inward outward. Today we are on day 5, where we are doing this from 10 to 12. 10 से 12 बजे तक हम इसका डिस्कशन करेंगे. 12 से 12:15 you will get a tea break, right? 12:15 से 2 again we will be continuing with our cold call, because this is a big session wherein I'll not only first tell you what you're supposed to do and then test you, that how are you doing it. So we will be doing cold calls with each other, wherein I'll be your customer and you will be my customer, and we'll learn how to exactly do it. Okay? Then you will have your lunch break at 2. So today the lunch break is not at 1, it's at 2, my dear friends. So be ready. And so 2 to 2:30 would be your lunch break. And then you have your VCIP account opening process, which would be taken by the Axis Bank people, and Axis Direct. Again, you will have the Axis direct people taking it. Same will happen with the VCIP. So उनके जो products third party के रहते हैं, they'll directly take it. इसके अलावा you will have NPS survey, which will be from 5:45 to 6:30. So from 2:30 to 5:45, you will cover Axis Direct and account opening process. And from 5:45 to 6:30, you will be covering NPS survey. Okay, so that's the day plan for today, and that's how you're scheduled continuously from now till 6:30 for your training. You will just have your lunch and tea breaks in the middle. Okay, so here we start. So what you'll be learning today with in the entire session would be making cold calls. Post the session on cold calls, which will get over at 2. After the lunch break, you will start with Axis Direct. Then you will be learning VCIP account opening process. Then this would get over by around 5:45, and from 5:45 to 6:30, you would be learning about NPS survey and assignment on customer profiles. Meaning that is what you'll be given, your assignment. Right? So let's start. What is making cold calls? What exactly do I mean by cold calls, my dear friends? A call wherein the customer is not known to me, right? A new to bank customer. And why would I target a new to bank customer? Why do I require NTBs? Existing अगर मेरे पास इतनी बुक है, तो क्या मेरा काम उस बुक से चल सकता है कि मुझे नए लोगों की जरूरत है? Do I need more people? And why do I need more people? Yes, we do need. First of all, existing is good, but we need to expand our business on the part of this. Also, it comes under KRA. Yes, absolutely. And the moment we get more people, our tap starts flowing in, because what happens is older customers might leave you. They might have some other, facility with some bank, or, there is a lot of, people who move out of the bank also. So the moment we get in new customers, we bring in new base for the bank. सो एनटीबी लाना बहुत जरूरी है, और एनटीबी लाने के लिए क्या करना जरूरी है? कोल्ड कॉलिंग. बिना कोल्ड कॉलिंग के एनटीबी नहीं आ रहा. ठीक है ना? हम रेफरेंस के थ्रू जाएंगे, बट रेफरेंस के थ्रू भी आप कितने जाओगे? क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग बेस है आपको तीन चार जनों का रेफरेंस दे सकता है. They can be our NTBs, a very good target or easy target, but still we have to do cold calling to increase that ask of our base, because until unless our base is not increasing, we are not flowing money. Okay, ना ही हमारा इंसेंटिव बनेगा, ना ही हमारी बुक बनेगी, और ना ही हमारा बुक ग्रो होगा. सो सब कुछ ग्रो करने के लिए, साइकिल चलते रहने देने के लिए we need to grow our NTBs, and उसके लिए cold calling जरूरी है. ठीक है? So let's learn how to make these cold calls. So why do we need these cold calls? As I told you, our map book growth and NTB, is our 47.5%. Okay. So ETB CASA MDAP is our 16% target, NTB CASA MDAP is 10%, liability TD 15%, and CASA NOA points are 10%. Fee income is 20%. Customer engagement and cross sell is 20%, which is customer engagement 15%, and insurance का जो आपका income है या mutual fund का is around 5%. Operating rhythm is 12.5%. So Triumph quality score is 9%.
So based on all this, आपका जो growth है, so almost 20% of your KRA is met through NTBs, right? And that is why we need to ensure that we are, just a second. That's why we need to ensure that we are, cold calling the customers, getting new to bank customers, because otherwise our KRAs will not be met. So what is a cold call? A cold call, basically a sales guy visit or a sales visit made to know a prospect who doesn't know about your proposition is a cold call. Okay? So we are visiting a customer who does not know anything about us. We are completely meeting him for the first time. He doesn't know the bank. He doesn't know anything about us as well. They're used to generate leads for new to bank customers. So cold calls are generally done to generate leads for new to bank customers, right? It benefits the opportunity to introduce yourself and your bank's product or sales or services. So the benefit is that you get a very good opportunity to introduce yourself, your bank's products. You have the ability and the time with the new client to sell your bank's product. And the impact of a cold call is generally you end up, getting a current account or a savings account. You get your new to bank CASA MDAP, or you get an opportunity to cross sell to that customer based on whatever is need. For example, you're meeting something like that, so when you meet a customer, a new story develops, and a new story leads to a new way of customer acquisition. It can be for remittances, it can be for current account, it can be for savings, term deposit. You never know what gold mine you hit in a cold call, right? Okay, so how does a cycle, a cold calling an NTB customer work? Okay. So you have to dress up for success and walk into customers' premises with confidence. Okay, that's the first thing. Your hair should be groomed, your attire, your body language, your sales mindset should be clear. Okay, your impactful self-introduction and creating a positive aura is very much necessary here. ठीक है ना, आप लेन से जाते हैं ठंडे से, हेलो सर मैं एक्सिस बैंक से आया हूँ, नहीं चलेगा. गुड मॉर्निंग सर, आई हैव कम फ्रॉम एक्सिस बैंक. दैट हमने उस दिन सीखा था ना, ये जो पिच होता है हमारा, पिच हैज टू बी रियली रियली enthusiastic, at the same time authoritative, at the same time positive, right? जब हम वो positive aura create करते हैं तभी अच्छा, then that impression is our first impression. The customer wants to speak to you, right? So for example, when I go and meet a client, I would shake my hand with him. I would offer a visiting card. And how do you offer a visiting card? Each time you give a visiting card, it's always given courteously with both your hands to both the hands of the client, right? And you introduce yourself. You should smell good. You should wear good clothes. ऐसा नहीं कि आप गर्मी से आ रहे हैं, पसीने से झुलस रहे हैं और आप अंदर घुस गए हैं. ऐसा कुछ है? Because obviously it's very hot nowadays. Whenever you go on a call, please ensure to carry a small deodorant with you in your pockets. So whenever you are about to, enter the client's cabin, ensure you drink a little water, put a little, perfume on you or a deo, and then do it. Okay, always do that. Getting to know and qualifying your prospect and understanding the customer need is the first thing you're supposed to do. So सबसे पहले आप questioning technique करते हैं, whether your customer actually qualifies. So at times you end up, in a cold call to a place where the customer is not actually of your category. थोड़ा सा लो कैटेगरी हो जाता है या थोड़ा सा हाई कैटेगरी हो जाता है. तो हमारी कैटेगरी का है कि नहीं वो फाइंड करने के लिए, यानी PBRM कैटेगरी का है कि नहीं, प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोपोजिशन के लायक है कि नहीं, जानने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस उसको पूछने पड़ते हैं. पोजीशन प्रायोरिटी बैंकिंग इन एक्सिस बैंक टू द कस्टमर, handling over brochures. Okay, so once you are handing over the brochures, once you feel that okay, अगर ये customer मेरे proper लायक है, तो I should introduce him with the benefits I am providing, and you hand over your brochure to him. Managing initial objections. If there are initial objections, we'll manage. We learned a few objections in a last class. We'll be learning more today.
setting up a follow-up and meeting and thanking the customer, follow-up date and time, setting up meeting with branch head or cluster head if required. So in case you feel that, you've ended up into a big shot and, you अकेले आप handle नहीं कर पाएंगे इस client को, तो please अपने bosses की, अपने branch head की, अपने cluster head तक की आपको help लेनी चाहिए, because everybody in the bank is equally responsible for generating these sales. हमारा काम है client तक पहुंचना, उसको acquire करना, पर जब हमें लगता है कि client बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें इसमें अपने bosses की help लेनी चाहिए, तो please बिंदास आप वो help लीजिए, so that you can get that huge share of business which you are looking at. So wallet size बड़ा आना चाहिए, right? Everybody with me till now? Any questions till here? Any questions which comes to your mind till here? All good? No, ma'am. Okay, thanks for that thumbs up, really helps. Okay. So, so what comes to one's mind is that I already have a map book. Why do I need to acquire more customers? So it's like a tap, constantly flowing fresh leads to NTB MDAP, leads to, the existing customer book may get, treated or depleted. So अगर हमारा continuous new to bank customer का flow आता रहता है, तो वो कभी ना कभी existing customer book बन जाती है, और हो सकता है वो client, he might leave the bank. So अगर हमारा नलका चलता जा रहा है, तो हमारा flow, हमारी pipeline हमेशा ready रहती है. A tap can supply water only if it is in the pipe. Your ETB map book will always have attriting accounts and maturing accounts, right? Newly acquired customers will balance your book and help you meet your KRAs, right? Everybody got this? तो अगर हमारे पास new customers हैं, तो वो हमारे KRAs build करने में हमारी help करते हैं. इसीलिए we need to always keep acquiring new customers. Okay? 6 steps in cold calling. What are these 6 steps? Identify the eligible target group to meet and where to find this group of customers. किसी को आइडिया है कि हम ये ग्रुप ऑफ कस्टमर्स कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमने आइडेंटिफाई करा है, तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये कोल्ड कॉल के लिए हमारे कस्टमर्स हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसे हम रैंडम कॉल करेंगे? हमारे कैचमेंट में देख सकते हैं कि क्या क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, और गूगल में ये भी मिल जाता है कि उनका कितना प्रोपोजिशंस है, कि उनका शेयर कैपिटल कितना है, वो क्या कंपनी स्टार्ट किए हैं, कहीं पे उनका लोन चल रहा है कि नहीं, पूरा गूगल में एक आता है Pro 42 करके, उसमें पूरा मिल जाता है क्या क्या कंपनी हमारे कैचमेंट में है. या जो भी जैसे मान लीजिए हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो चेक्स वगैरह डिपॉजिट करते हैं दूसरे वेंडर का, जैसे मान लीजिए कोई रियल एस्टेट का है, तो वो कहीं से सीमेंट खरीद रहा है, तो वो कहाँ से सप्लाई कर रहा है, उससे कुछ पूछ लिए, या चेक्स का लिस्ट बना लिए कि किस किस कस्टमर का वो चेक्स डिपॉजिट कर रहा है, वहां पे हम लोग विजिट किए डायरेक्ट जाके, तो वो भी कैचमेंट हो सकता है. या यहाँ पे देख लिए कोई बड़े where you can find out new customers. या जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स है, तो आइडिया लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका ईयरली CTC 12 lakhs to 18 lakhs है, वहाँ पे भी हम लोग जा सकते हैं कुछ NTB सेविंग्स अकाउंट के लिए. Right, absolutely. Yes, others, tell me, what are your views on this? Arindam Roy, will you like to share your view? मैम प्रोब से भी हम लोग सेल्फ इंट्रोड्यूस करके निकाल सकते हैं, प्रो 42 से. Yes, property like Magic Bricks 99 acres से, right, absolutely. Yes, Mr. Arindam Roy, what is your view on this? Any other ideas? So हमें आदिनायक जी ने बताया कि अगर सीमेंट डीलर है या किसी डीलर से या बड़े ऑफिस से हम पता लगा सकते हैं. रॉकी ने हमें बताया कि हम प्रॉपर्टी साइट से पता लगा सकते हैं. Yes, what does Arindam say on this? You're on mute, Arindam. We cannot hear you. Yes, Sue, tell me. बिजनेस देख के उनका बिजनेस और प्रॉपर्टी देख के पता चल सकता है क्या प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल है कि नहीं. Right. So that also you can find out. Yes, Dashrath, tell me.
मैम एमसीए साइड से न्यू कंपनी रजिस्टर्ड जो होती है वो तो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसके थ्रू भी, और डायरेक्टर से और न्यू कंपनी फॉर्म रजिस्टर्ड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेकेंडली एटीएम मार्केट लोकेटेड नियर बाई मार्केट लोकेटेड एटीएम है, वहाँ पे भी हम जो एटीएम विड्रॉल है क्लाइंट के वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्लाइंट का। Right, absolutely right. Okay. इसके अलावा सू, yes, you have raised your hand. Yes. Your voice is cracking, Sue. I cannot hear. I cannot hear you, Sue. Can others hear him? No, nobody can hear you, Sue. There is some error in your network. Okay. Yes, Rajesh Kumar ji, boliye. Good morning, ma'am. Good morning. Basically, apart from this segment, I think if any big society in our catchment area, that is best option for priority customer. Big hospitals, big education institute. This is Yes. mainly for basically priority savings account, I think. Yes, absolutely. इनफैक्ट उसके अलावा आप जो प्रैक्टो का ऐप होता है उसमें आपको सारे डॉक्टर्स का डिटेल मिल जाता है, राइट? वहां से आप डॉक्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर जो एजुकेशन के ऐप्स होते हैं उसपे आपको टीचर्स के डिटेल्स मिल जाते हैं। प्रोफेसर्स के ऐप आते हैं, जो भी कॉलेजेस में ना प्रोफेसर्स की जो साइट्स होती हैं, जो भी सीनियर प्रोफेसर होता है वो अच्छा खासा अमीर होता है, तो उन सब के नाम आपको वो कॉलेज की साइट से मिल जाते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे कई जगह उनके नंबर्स भी दिए होते हैं और ईमेल आईडीज भी दी होती हैं, तो उनके थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इनको इस तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोफेशनल्स आर ऑल ब्लू कॉलर पीपल, ऑल हैविंग गुड मनी easily and white money, तो अपने को तो white ही चाहिए for our investments, right? So that's our very good and easy target, and these are very decent people to go and meet and get business out of them. Yes, any other ideas which we have not thrown upon the yes, Vivek, tell me. मैम प्रोफेशनल्स क्या बोला था, कहाँ से देखना पड़ेगा बोला था आपने? प्रोफेशनल्स प्रैक्टो से आप देखिए डॉक्टर्स, और जितने भी कॉलेजेस हैं आपके आजू बाजू, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पुणे में हैं तो पुणे में आपको बेस्ट कॉलेजेस पेपर्स में पता पड़ते हैं, वैसे भी उनके दे आर वेरी रिनाउंड कॉलेजेस, राइट? सो जो भी रिनाउंड कॉलेजेस हैं वहाँ के साइट पे जाइए, और वहाँ पे साइट में आपको पूरे प्रोफेसर्स, उनका वाइस चांसलर और सारे प्रोफेसर्स की डिटेल मिल जाएगी। प्लस साथ में उनकी ईमेल आईडी तो होती ही होती है, कई जगह उनके नंबर्स भी होते हैं, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप है, ईमेल है, आप कांटेक्ट करिए, अपॉइंटमेंट सेट करिए, मिलिए, राइट? डॉक्टर्स यू गेट फ्रॉम प्रैक्टो, टीचर्स you get from all these tutors site nowadays. So if you go and check, there is a app called Urban Pro, then there are a lot of apps which come to contact teachers. Okay, there are a lot of teachers who teach for IIT JEE. There are a lot of teachers who teach these tuitions, again very well earning teachers. You can again contact them through these sites. वहाँ पे आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा, उनका व्हाट्सएप डिटेल भी मिल जाएगा, ईमेल भी मिल जाएगा. So lot of apps give you a lot of these stuff which are available readily on app. Right? आया समझ में इंद्रजीत? Yes, ma'am. Thank you. Right. So moving further. Where were we? Six steps of cold calling. Identify the eligible target group to meet. Where to find this group of customers? ठीक है. So target group find कर लिया. मान लीजिए आपने देखा कि जहां आप आपका जहां जिस ब्रांच में आपकी पोस्टिंग है वो ब्रांच में काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं पर डॉक्टर्स ज्यादा टारगेट नहीं हुए हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ज्यादा टारगेट नहीं हुए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा बिजनेस है, तो कंस्ट्रक्शन की डायरेक्टरी लेके आइए, उसमें से उनको टारगेट कीजिए। कंस्ट्रक्शन की बाकायदा डायरेक्टरी आती है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट दैट वे यू कैन इवन डू. सो प्लान हाउ विल यू अप्रोच द कस्टमर, via telephone or face to face. Initial setup has to be done via a telephone, WhatsApp or a email, so that he can call you, and then take it to face. Prepare, find out about the customer through website, through Google, through LinkedIn, and then plan your pitch. Okay, आपको सारी डिटेल हर आदमी की आजकल
वेबसाइट पे मिल जाएगी, नहीं तो गूगल पे मिल जाएगी, नहीं तो लिंक्डइन पे मिल जाएगी, और तीनों में आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, होगी, बट नहीं है तो आप प्लीज लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, और आप इन कस्टमर से वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको इनका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ये क्या करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, व्हाट इज देयर ग्रोथ पैटर्न, उससे आपको पता पड़ जाएगा कितना बड़ा आदमी है, और उस हिसाब से आप रेडी होके जाइए. Groom up and dress well. This is very, very important, my dear friends, for all the ladies and gents who are sitting right here in my class. Please, grooming is a very, very important aspect of a banking employee. Okay. You have to ensure that you are dressing up well. जितने आप सीनियर आदमी से मिलने जा रहे हो, उतना अच्छा ब्लेजर पहन के जाओ, उतने अच्छे जूते आपके पॉलिश होने चाहिए, चाहे हम लेडीज जा रही हैं, चाहे आप जेंट्स जा रहे हैं. Everybody has to dress up well. Okay, if you're going to an industry or a corporate setup, fully dressed with a tie and a blazer. If you're going in a company setup or a small shop kind of a thing, then probably only tie, blazer is not required. You can dress up well, full sleeve shirt. Ladies can wear salwar kameez if they're not wearing, blazers, and accordingly go and meet the client. Okay, so grooming is very, very important. Introducing yourself, probing and profiling the customer is the next step you will be doing once you meet the client face to face, which we'll learn in our later slides. Identify the need and try and create the want in the mind of the customer. ठीक है, आप नीड तो आइडेंटिफाई आपको बाय रीडिंग हिज प्रोफाइल काफी कुछ पता पड़ ही जाएगा, बट उसके अलावा यू हैव टू क्रिएट दैट वांट इन हिज माइंड कि ओके सर आप ये चीज करते हैं और हम ये चीज प्रोवाइड करते हैं जो बहुत अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली आपको कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट होगा. ठीक है, सो देन कम्स द आइडिया ऑफ प्रोस्पेक्टिंग. सो हाउ जस्ट नाउ वी लर्नड कि ये चीजें हमें कोल्ड कॉलिंग पे करनी है, बट इससे पहले हम देखेंगे हम प्रोस्पेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ के लोगों को हमें पकड़ना है, कौन सा हमारा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, राइट. सो हाउ डू वी डू दैट? लेवरेज योर माइक्रो मार्केट वाया मार्केट स्कोपिंग. ओके, सो आप जिस भी सिटी में बेस्ड हैं, उस सिटी में किस तरीके के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस या आईटी पार्क्स हैं. सो अगर मैं आपको पुणे का एग्जांपल देती हूँ, तो पुणे इज अ आईटी हब, है ना. इट्स कंसिडर्ड टू बी अ आईटी हब, इट्स कंसिडर्ड टू बी एन एजुकेशन हब. तो वहां के ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे हैं, कौन से एरिया में? तो अगर आप देखोगे तो पुणे के कॉम्प्लेक्सेस जो आईटी पार्क्स हैं, दे आर इन हिंजेवाड़ी और इन खराड़ी. दीज आर टू फार ऑफ प्लेसेस देयर. सो वहां पे कौन से ऑफिसेस हैं, किस तरह आप उनको अप्रोच करोगे, हाउ विल यू गो देयर? सो फर्स्ट टारगेट दैट. नेक्स्ट कम्स अपस्केल सोसाइटीज that you will find out by where your branch is there, और उसके आजू बाजू कितनी बड़ी बड़ी एकदम हाई क्लास सोसाइटीज हैं. Then you find out what are the government offices in that vicinity. What are the schools and colleges? Very important. Schools and colleges में आपको किसको टारगेट करना है? टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, हाई क्लास गोइंग स्टूडेंट्स हैं. Like for example, any student who is going to a GD going का or a high fees kind of a school are all your target client segment. उनमें पढ़ने वाले बच्चे और उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स, ये सारे आपके टारगेट सेगमेंट है. देन रेस्टोरेंट्स में जाके आप उनके साथ थोड़ा सा टाई अप टाइप कर सकते हैं कि कैन यू गिव मी योर हाई बिल पेड कस्टमर्स की डिटेल्स. अगर आप उनको कोई आपकी इवेंट उनके साथ हो रही है और आपने कोई कस्टमर की इवेंट रखी है, तो दे माइट do this sharing of data with you. Then your retail outlets, your clinics, your stores. Again, अगर आप उनके साथ कोई टाई अप करते हैं कि आपकी कोई इवेंट होगी जो आप स्पॉन्सर करेंगे, उसमें अपना रिटेल आउटलेट भी अपना बैनर लगा सकता है, तो they can also share some details with you. So micro and small businesses, industrial estates, hospitals and diagnostic laboratories से भी आपको डिटेल मिल सकती है. हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज आपसे क्यों डिटेल शेयर करेंगे? क्योंकि आप उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, आप उनके लिए कोई पर्टिकुलर सोसाइटी में एंट्री दिलवा सकते हैं इफ आपकी वहां पे जान पहचान है. सो समथिंग लाइक दैट विच वर्क्स फॉर योर बेनिफिट एंड विच वर्क्स फॉर देयर बेनिफिट, data can be then passed on to you. आया समझ में? Any questions here? Anybody wants to understand anything on this slide?
Anything which confuses you, which says that how will I do this for my clients? Anybody in the class? Any query? If no query, please give a thumbs up. Yes, I got a thumbs up from 2 or 3 people. Please, everybody, can you take a pain of giving a thumbs up if you've done, you're understood? Thank you so much for that thumbs up, friends. Okay, so moving further. Prospecting and ways to connect at each level. So we have individual, that is existing priority customers, SOHO, that is small office, home office customer, MSME, that is micro, small and medium enterprises, and top corporates. So how do I connect to a top corporate? I connect to key employees and seek appointments, leverage brand salary relationships. ठीक है? So जैसा कि मैंने आपको cold calling, जब हमने वो रोल प्ले किया था, तब बताया था कि जब भी हम किसी कॉर्पोरेट के पास जाते हैं तो उनके जो की एम्प्लॉयज, की अकाउंटेंट्स, रिसेप्शनिस्ट, इन सब की ना अच्छे से मस्का पॉलिश करते हैं हम लोग, सो दैट ये हमको बहुत इज्जत से बुलाएं और हम हमारे को अपॉइंटमेंट मिलना इजी हो. ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिवाली के समय या जो भी समय आपके पास बजट में गिफ्ट्स आती हैं, आप सबसे पहले इन एम्प्लॉयज को देंगे. ठीक है? जब तक आपका नीचे वाला एम्प्लॉय खुश नहीं है ना, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. सो प्लीज इंश्योर दैट आप ये जो भी अकाउंटेंट, जो भी आपको मिलने वाला है, आपको फेस करने वाला है, जिसका आप फर्स्ट पॉइंट कांटेक्ट बनोगे, उसको एकदम पटा के रखो. ठीक है? उसको पटाना अत्यधिक जरूरी है. ओके? देन योर एमएसएमई और ऑनलाइन और लोकल ट्रेड डायरेक्टरी से आपको एमएसएमई क्लाइंट्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, लोकल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से मिल जाएंगी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की डायरेक्टरी आती है, CII डायरेक्टरी, या फिकी की डायरेक्टरी आती है. इनसे आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी. या फिर अगर ब्रांच में किसी कंपनी के सैलरी अकाउंट्स हैं, जैसे ONGC वालों के होते हैं या गेल वालों के होते हैं, या डिपेंड आपके वहां पे कौन सी कंपनी है, उसकी सैलरी रिलेशनशिप से आपको पता पड़ जाएगा कि उनका जो सैलरी आता है, उसमें जिनकी ज्यादा सैलरी आती है, वो सारे के सारे आपके टारगेट कस्टमर्स हैं. ठीक है? ब्रांच का ट्रांजैक्शन बैंकिंग रिलेशनशिप से भी आपको पता पड़ जाएगा. और ये जो डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी, जो MSME डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, उनसे भी आपको काफी डेटा मिल सकता है. Similarly, for small office and home office, you get, websites like Practo help find doctors, Just Dial for lawyers and CAs. ठीक है? आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स मिल जाएंगे जस्ट डायल से. और अपने कैचमेंट एरिया से आपको बाकी डिटेल्स, बाकी बड़े बड़े ऑफिस की भी मिल जाएगी. अगर मान लीजिए सारे ऑफिस किसी कॉम्प्लेक्स में है, तो आप वहां से आपको इसकी सारी डिटेल मिल सकती है. ठीक है? इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी कस्टमर्स, रेफरेंसेस फ्रॉम existing priority customer, best source for family banking, existing asset relationship, housing loan, auto loan, lab, SBB, ये सारों से आपको उनकी फैमिली बैंकिंग के थ्रू, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर से तो ऑब्वियसली आपको रेफरेंसेस के थ्रू न्यू कस्टमर्स मिल सकते हैं, या फिर आपके जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, जिन्होंने सिर्फ हाउसिंग लोन ले रखा है या सिर्फ ऑटो लोन ले रखा है, उनके थ्रू भी आपको न्यू टू बैंक कस्टमर की डिटेल मिल सकती है, जिसको आप यू कैन रीच आउट टू दैट कस्टमर. करंट अकाउंट विद नो सेविंग्स अकाउंट भी होता है कई कस्टमर्स का, और किसी कस्टमर का खाली सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट नहीं होता. तो उसको दूसरा पिच करना, उसके थ्रू यू कैन गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स. इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप्स वेयर नो सेविंग्स बैंक अकाउंट आर मेंटेन्ड. ठीक है? तो कईयों की हमारे पास सिर्फ वेल्थ रिलेशनशिप होती है, तो इन दैट केस आप उसको सेविंग्स अकाउंट पिच कर सकते हैं. सेविंग्स अकाउंट के थ्रू आपको फैमिली अकाउंट मिल सकता है. So certain investments account where no savings account is maintained is again an NTB customer. So all these TPP customers जिनके पास सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, पर मेन हमारा सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं है, ये हमारे सीधा न्यू टू बैंक कस्टमर है. ठीक है? तो इजी है, ऑलरेडी बैंक से ये सब चल रहा है. कॉन्टैक्ट करो, कोई भी स्टेटमेंट के बहाने से मिलो कि सर आपको स्टेटमेंट दिखाना था, आपका ऑलरेडी अकाउंट है, और अकाउंट खोल दो, आपका NTB खुल जाएगा. Slowly you can pitch him other cross sell items. So this is an example of how do you find doctors on Practo and professional contacts from Just Dial.
right? Look for suspects in your micro market. Doctors, contact on practice. Search for doctors in Delhi, Sarojini Nagar. आप कहाँ पे हैं वो जगह को सर्च करेंगे तो पूरी डिटेल आपको इस तरह से आ जाएगी। ये बंदे का नाम, किस फील्ड में है, कहाँ पे उसका ऑफिस है, तो उससे बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ऑफिस है तो ऑब्वियसली अगर अच्छी जगह पे है तो अच्छा रेंट देती होगी, अच्छा रेंट देती होगी तो बड़ी क्लाइंट है, उसका ऑफिस चलता है, उसकी प्रैक्टिस चलती है, दैट वे। सो आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है इन सब चीजों में कि अच्छा अगर आई एम डूइंग if I am targeting this particular doctor, is she eligible for my services or not? Is she the category of customer I am looking at not? So वो आपको कैसे पता पड़ेगा? सिंपल चीजें हैं, कॉमन सेंस पे जाइए। आप उनका फोटो से, उनके एड्रेस से सारा आपको ये समझ आता जाएगा कि अगर ये यहाँ पे काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का ही बहुत ज्यादा रेंट है, तो ऑब्वियसली ये एक अच्छी डॉक्टर है। प्लस उनकी रेटिंग नीचे होती है, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। प्लस उनकी फीस से भी आपको समझ आ जाएगा। कई डॉक्टर्स का अगर आप देखेंगे तो फीस 200 रुपीज भी आती है। एंड देन इट सेज दैट यू कैन डू देम ऑन अ वीडियो कॉल ऑल्सो। तो उससे आपको सीधा समझ आता है कि ये डॉक्टर बहुत ज्यादा चलता नहीं है, इतना ज्यादा अगर कम फीस है। सो योर एवरेज fees of a doctor should be above 500 to 1000, then only you target that particular doctor. So थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए तभी किसी कस्टमर को मिलने चाहिए। आया समझ में? Just go through this screen and tell me what do you understand from here? जो डॉक्टर का स्क्रीन बड़ा हुआ है उससे आपको क्या समझ आया? Can you tell me? Can someone tell me this? Seasoned doctor. Yes. This shows that she's a seasoned doctor and her rating is good. And does it show where her office is? It does show where her office is. It also shows her fees, right? So this gives me an easy idea कि अगर इतना fees charge करती है तो obviously she is a good doctor, right? Everyone with me on this? Is this clear? Am I audible properly? Yes or no? Okay, I got a thumbs up. Yes. Yes, ma'am. Right. Good. तो हमें ये समझ आ गया कि हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं. Good. Okay, moving further. Professional contacts from Just Dial. Okay, search for lawyers in Bandra, Mumbai, and you get lawyer, his rating, his details, his number. तो ये हमें क्या मिलेगा? उसका असिस्टेंट का नंबर. इससे हम उसके पास जाएंगे और हमें पता पड़ जाएगा उसकी रेटिंग से, उसके शॉप से. You are on. Able now? Yes, ma'am. Yes, Thank ma'am. you. Okay. So here we learned about lawyers, how to find the details on the rating and their fees, and based on their office, go and meet them. If you find them, attractive, that they are, your kind of client जो आप ढूंढ रहे हो, ठीक है? Generating leads. How do you generate leads? Through natural market, which is known market, which is your friends and family, your relatives, your institutions, employees, neighbors, doctors, societies. Friends and family से आपको मिल जाता है reference. Relatives से आपको पता पड़ जाता है again reference. कौन सी जगह कैसी है, कौन सी सोसाइटी वहां की बड़ी है. मान लीजिए आप एक नई जगह पोस्ट होते हैं. Yes? Is somebody saying something? Somebody's on. Arindam Roy, please mute yourself. Okay.
right? So we get to know from our relatives that, you know, which area in that particular city is good, which area is a posh locality, right? Like in Bombay, we know that South Bombay is posh, right? In Delhi, we know South Delhi is the posh area of Delhi. But ये एक बड़ा टर्म हो गया है ना. अगर मैं बॉम्बे में हूँ तो मैं सारा बॉम्बे तो कवर करूंगी नहीं. बॉम्बे इज वेरी बिग, राइट? इफ आई एम पोस्टेड एज एन RM in Mumbai, I will not be able to cover all the areas in Mumbai, right? So where I am, like जहाँ पे मेरी branch based है, plus even if I cover the entire Mumbai, people from far off places would not bank with my branch. They would bank to the nearest, right? So my idea of finding out, posh locality should be from my friends and relatives, finding out कि where you are based, जहाँ आपकी branch है, उसके पास कौन सी societies हैं जो posh हैं, जो आप target कर सकते हो. कौन सी institutions हैं जो posh हैं, कौन से ऐसे employers हैं जो big time big shots हैं, ठीक है ना? कौन से ऐसे नेबर्स हैं आपके जो आपको ये बता सकते हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स पॉश लोगों से हैं. मान लीजिए आप बॉम्बे में रह रहे हैं और आपका नेबर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है? वी वर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर वी हैड people working with CNBC TV channel, and we used to have they had a Sunday rundown where they used to come for the society, give a finance update, okay, ki this particular stock would do good, this particular stock would not do good, and etc etc. So these people, these neighbors would can tell you ki okay, if say for example a CNBC TV representative is living in a society where you live, if you build up rapport with him or her, I'm sure she or he can guide you for other employees of that organization, and you can actually click a big deal there, right? So neighbors, doctors, and other professionals, your societies, social media, इस सब से भी आपको काफी आइडिया आ जाता है कि जहां आप रह रहे हो उस जगह पे. सो द मोमेंट द सोशल मीडिया यूज इज वेरी इजी. आप इंस्टा पे जाइए, जहां भी आप रह रहे हो वहां की जो follow the groups of that city. Okay, so it can be following the big chain of restaurants in say whichever city you are, then following lawyers, or say the chartered accountants of that city, or following any other social media influencer of that city will give you an idea, ki how for example there are cities which have these dog shelters. They have these places where a lot of dog food or dog hostels are there, right? Follow them, from because people who generally own dogs or pets are kind of the cream richer people of the society, so we have to target them, right? So these are certain tips which you have to use. Like for example, आप जिस जगह पे रह रहे हो या आपकी ब्रांच जहाँ पे है, and when you go to the branch and you go outside and you see कि oh God, यहाँ पे तो इतने सारे pet shops हैं, that means that people in the nearby vicinity where I am, my branch is based, have a lot of pets. Try and find out that information from those pet shops. How will you do that? You have to build that rapport with the pet shop वाला. उससे पता पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर चलता कौन सा है. वेटरनरी डॉक्टर से ये पता पड़ेगा कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट चलता है, किस तरह की ब्रीड्स हैं. मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहां पे dog breeds, right? So there are some breeds which are at say of lower cost, average cost. Some breeds are which are very very costly. So if you find a lot of small teacup puppies and breeds which are highly costly, they start from 1 lakh 2 lakh, you straight away know this is my client. Similarly, clients which own a dog breed of 40-50,000, like a beagle ho gaya ya Shih Tzu breeds ho gayi, there are a lot of these breeds, right? You know the target client. So this is how you have to. So these are small tips which your mind should always keep working. Is this my target client? Is this my target client? Is this my target client? जहां जहां दिख रहा है आपकी आंखें सिर्फ आपका टारगेट क्लाइंट ढूंढनी चाहिए, and you will be able to find out. So these are your natural markets. Then you have referral markets, which are references from your existing clients, which you don't know, but your client has said that this particular person can be a potential client of yours. So referrals from existing clients.
क्रॉस सेलिंग टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, तो आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को अगर क्रॉस सेल हो चुका है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना कि उनका हमारे साथ इन्वेस्टमेंट चल रहा है या उनका हमारे साथ टर्म डिपॉजिट सॉरी ये लोन्स चल रहे हैं और उन्होंने हमारे पास सेविंग्स रिलेशनशिप नहीं खोली है, तो दोज क्लाइंट्स. Campaigns and management initiatives. So what are campaigns and management initiatives, friends? Can you throw some light on this? तो अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो आप बोर हो जाएंगे. I wanted to be interactive. Yes, Preeti, can you throw some light on this? Campaigns and management initiative क्या होता है? Any idea? Yes, ma'am. Like we can arrange some campaigns to say some big colleges also. It may be happen. Like I think that should be one. Yes, Like absolutely. some, That is yeah. one way of doing it. You go and do a campaign on Or some government sectors if we have and if they allow us to for a day. It means if we can seek a permission and then we can arrange one campaign for a short period of time. That may also help. yes, absolutely. Yes, Suman, you would like to say something? मैडम जो वहाँ पे जो बड़ा बड़ा सोसाइटी है वहाँ पे अगर कुछ एक्टिविटी जो होता है वहाँ पे बच्चों का तो वो भी बैंक के थ्रू होता है. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. वहाँ पे भी बहुत सारा लीड आता है जब बड़ा बड़ा सोसाइटी से. हाँ बिल्कुल, वहां पे जैसे अगर गरबा जैसे गुजरात में गरबे होते हैं, राइट, आपने सोसाइटी का गरबा स्पॉन्सर किया तो वहां से आप काफी, अगर आप एक एक मान लीजिए जो भी खेलने आ रहे हैं उनको डांडिया देते हैं तो उनके नाम नंबर नोट करते हैं. दैट इज वन वे. But what campaign and management initiatives we are talking here is, at times we get these budgets from our management which say that you can do some marketing activities, right? So these marketing activities can be, like arranging for a movie show for one society. Okay, you sponsor a movie show. Abhi to kya, after COVID, this has become slightly challenging. People are not going to theaters. But still, अगर आप free movie दिखाओगे तो I'm sure India में लोग जाते ही हैं. फिनिकी जो जरूर हो गए हैं लोग, but they have still not lost that interest in movies. So what you can do is sponsor a show like Pathan was a very good movie. It worked well. So if you sponsor in initial days, अब तो खैर पुरानी हो गई picture, some movie like that which can be sponsored by the entire show is booked by your branch, and you have given tickets to all people who you feel are elite. Okay, apart from your existing clients, you have asked your existing clients that we give you this ticket for you and your family, provided you get 2 new clients for us like you. है ना? So we will give you, say example, आपका friend है जिसके 2 जने हैं, आप 4 चाहते हैं, मैं 4 दूंगा, पर मेरे 2 क्लाइंट बनने चाहिए सर. आप ऐसा करेंगे तो भी आपको बिजनेस मिल सकता है. दैट इज वन वे. अनदर वे इज आप सोसाइटी में जाइए और सोसाइटी में प्रोपोगेट कर दीजिए कि हम ये पर्टिकुलर मूवी दिखाने वाले हैं फलाना दिन पे. Only eligible members are this society members, and get your name and numbers of that society. आपको आराम से मिल जाएगा. Right, so these are certain management initiatives where the management would give you that budget, because obviously booking the entire theater is a good cost to the company. But what the company sees at the same time is कि आपने वो budget से कितना revenue generate किया. अगर आप सामने बोल देते हैं कि मैं इतना revenue generate करने की क्षमता रखता हूँ, I am very sure कि this would generate a revenue, and your boss is convinced, you can actually do it. Right? So these are certain things which can be played around for marketing or at your level. These are smaller levels at your branch level. But if you want to get a good amount of new to bank customers, these are the things which you do. One, showing them, say, a movie show. 2, a theater. 3, sponsoring a meal for, 5-star meal for our, elite society clients, provided every elite society family brings one more family. Okay, which is new to you and gives you detail and gives you appointment. If all these and are met, then you call them for this elite dinner at a 5-star restaurant, which is budgeted. The budget is provided by your bank, right? Is everybody with me on this till here? Please give a thumbs up if everybody's on this, understanding what I'm saying. Thank you so much for those thumbs ups. Okay, great. Moving further. So professional networks, campaign and management initiative हमने discuss किया.
प्रोफेशनल नेटवर्क्स वही, अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर का रेफरल दे सकते हैं। मैंने वही जैसे आपको बताया ना कि डॉक्टर की कोई इवेंट स्पॉन्सर कर दी, वहां से आपको और नए डॉक्टर्स मिल जाएंगे। लॉयर्स की कोई इवेंट स्पॉन्सर कर दी, देन ट्रेड शोज जो होते हैं उनमें आपने कुछ स्पॉन्सर किया, तो ये सब के लिए आपको बजट चाहिए जो आपको मैनेजमेंट के थ्रू मिल जाता है अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का प्रॉमिस करते हैं एंड slowly उतना जनरेट करें। So a time period is given from the event to the time the revenue is generated. You get a good time frame of 1 month to 3 months depending on the kind of budget you have used for these campaigns and initiatives. Okay. So I myself have done these two. So, events and initiatives for, acquiring clients, and it really works. So, all these things are very, very important and useful. So how do you create a sales funnel? Creating a pipeline for new acquisition, mapping branch catchment, filter shortlist suspects, engage with prospects and acquire. So सबसे पहले जो आपके ब्रांच के लोग हैं वहां से आपकी ये पाइपलाइन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो भी यस ये जो आपने बोला जो बजट मिलता है बैंक से, ये मतलब हम लोग मतलब किसके थ्रू अप्लाई करना पड़ता है या कहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं? देखिए जब आपको इस तरह का आइडिया आता है ना तो यू हैव टू डिस्कस दीज आइडियाज विद योर लाइक योर इमीडिएट हेड, ओके, योर टीम head. And with your team head, when you're sure that, this particular thing would really work, you have to convince your team head. Once your team head is convinced, he will automatically convince his boss and you will get this budget. Can you switch on your camera so that I can see you while answering this question? Who was this? Indrajit. Yes, Indrajit. So what comes to your mind when you ask that question to me? So have you thought something? So why I'm asking you this is because whenever you frame such details to your boss, your conviction level has to be very high. You have to say that an X amount of amount spending on this particular event would give me this kind of revenue. I can assure you that, sir. The moment your surety comes into, आप उसका पूरा Excel बना के उनको देंगे, अपने बॉस से बात करने से पहले your homework should be ready, right? आपका एक टीम हेड होगा, टीम हेड आगे ले जाएगा, आपको बजट मिल जाएगा, बट कन्विक्शन यहाँ आपके लेवल से शुरू होता है। सो आप कन्विंस होंगे इतने एक्सपेंस पे इतना रेवेन्यू कर दूंगा। जब आपने वो कन्विक्शन को एक्सेल पे जॉट डाउन कर दिया ना, मान लीजिए आप मूवी दिखा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप आइनॉक्स में दिखा रहे हैं, आइनॉक्स से आपको एक अच्छा डील पहले क्रैक हो जाएगा। दे ऑल्सो गिव डिस्काउंट्स व्हेन यू डू द एंटायर हॉल बुकिंग, फूड पे और सब पे डिस्काउंट मिल जाता है। वो डिस्काउंट के बाद आप अपना कॉस्ट कैलकुलेट करिए, कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद आप सामने ये कैलकुलेट करिए कि इतने लोग आएंगे, इसमें से मेरा इतना रेवेन्यू तो आराम से बनेगा। सो योर बजट vis-a-vis योर रेवेन्यू शुड बी मोर देन डबल मिनिमम। जितना ज्यादा दिखाओगे उतना इजी सैंक्शन मिलेगा, और दिखाना नहीं है, करना भी है। So you'll be questioned if you get a budget sanctioned, you will be questioned on the revenue, which happens if you do these kind of campaigns. It happens. Yes, anything which comes to your mind. As you said, you also have done, like what kind of campaigns have you done? Like आपने जो किया था? Well, I did this campaign on, so at my time, Bunty Bubbly was a famous movie. We had shown this movie to people around our society, around our branch, and we had targeted societies, like I as an RM had targeted societies near my area, my branch area. And we had called all these elite people wherein we were this is prior to COVID times, right? So some people were happily coming. Then we had sponsored a dinner at Taj. Okay, these were, I think we had called around 75 customers. So each customer had only one criterion, that with your family, how many members he wants to bring. We need one new to bank family. Okay, we will, the sponsor food is from our side, but we need this client's details. So that's how, so even the same funda worked for the movie. And then we did this Garba, and these events we always do, Diwali sponsoring, Garba sponsoring. So these are small budgets, but these require a bigger budget. So something like this can be done once in a year, like showing a movie or, doing a 5-star dinner of a lot of people, because this requires a big budget.
But at that time, you have to promise that you are sure that you can generate this kind of revenue. And it happens, revenue generate हो जाता है, because out of so many customers, 2 customer भी अच्छे मिल गए ना, धड़ाधड़ रेवेन्यू बनता है. बिकॉज सी आप एक बड़े कस्टमर को एक बड़ी इंश्योरेंस दे दोगे, आपकी फी इनकम ऐसे ही बन जाती है. ठीक है, आपको उनमें से एक बड़ा करंट अकाउंट मिल गया तो आपका एमडैप टारगेट वहां मीट हो जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट वन क्लिक डील. इतने सारों में से 3-4 तो क्लिक होते ही होते हैं, और उनमें से अगर एक बड़ा कोई मिल गया तो सारे टारगेट ठगड़क ठगड़क पूरे हो जाते हैं. राइट, सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. But you have to be convinced that I'll be able to do this. Then only you can convince your boss and your boss's boss. Right? That's how it works. Okay, Indrajit, shall we move it? Welcome. Shall we move further? Okay, right. So moving further, I was talking about creating this funnel. Okay, so create a pipeline for new acquisition, mapping branch catchment, the area near the branch. Is it? Just a second, friends. Give me a second. I'll join you back. Just a second. Yeah, friends, I'm really sorry for that disturbance. Yeah, so we were talking about creating your sales funnel. Am I audible properly? All good, right? So when you Yes, create ma'am. this, thank you. So when you create your sales funnel, you have to map the area where your branch is, okay? The branch catchment area, what kind of locality you are in. And then from that locality, you filter and shortlist your suspects of people where you feel this is my target client, okay? You engage with these prospects and you then acquire, okay? So how do you engage? Some ideas I just throwed upon you, and some ideas which come to your mind that this is the way I can, really try and find this suspect, okay? So suspects, then once you get a pre-qualified idea कि okay ये इस सोसाइटी में रहता है या इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काम करता है या ये इस लेवल का लॉयर या डॉक्टर है या फिर ये इस लेवल का बिजनेसमैन, एक प्री क्वालिफिकेशन रेडी हो जाती कि हाँ ये बंदा अमीर है, ये मेरा टारगेट कस्टमर है, मैं नेक्स्ट ट्राई करता हूँ अपॉइंटमेंट लेने का. ओके, सो आई ट्राई एंड गेट एन अपॉइंटमेंट and it can be as simple as giving a cold call on phone, or else if he's a very big shot, trying and getting this call through his or her secretary. Okay, then based on that cold call, I am lucky enough to get that first face-to-face meeting, and when I get this face-to-face meeting, I find out that yes, this was the right client I was searching for, and he qualifies for my priority preposition, right? Based on that, I follow up for further engagement. So मैं first मीटिंग में उसको ट्राई एंड कन्विंस करती हूँ कि सर आप मेरे साथ कुछ जो भी आपको उसमें इंटरेस्ट लगता है, करंट सेविंग्स, व्हाटएवर प्रोडक्ट्स यू हैव, wherever he takes interest, wherever the flow of your conversation goes, you try and create that need of your product in his mind. ठीक है? And based on that, you fix up a follow-up call that, sir, can we, it was very good meeting you today. Can we meet up on this day again to, try and close on something?
And based on your interest, product and pitch and your FTF meeting, you finally close on that account or that product which you are selling to him, and you acquire the customer. So this is how it works. So 260 क्लाइंट अगर आपके प्री क्वालिफाई होते हैं तो कहीं जाके आपके 5 क्लाइंट आप एक्वायर करते हो, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स. दिस इज द फनल एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू कि आपको कोल्ड कॉल्स तो बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं, तब जाके आपको कहीं पे ये कस्टमर एक्वायर होता है. सो एक्वायरिंग अ न्यू टू बैंक कस्टमर is not that easy. So how do you do a research about your suspect? You always be prepared for cold call. Okay. Check the website, find out details of this customer on the website, make a phone call to Scope and script the opening conversation. ठीक है? So आप पहले सारी details निकाल लीजिए, script करिए conversation को और अपना फोन कॉल निकाल के रखिए. मतलब फोन कॉल के बेसिस पे आपको एक स्कोप रेडी कर देना है कि ओके मैं इस कस्टमर से ये बात करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए किसी डॉक्टर को फोन कर रहे हैं, ठीक है? तो आप किस तरह से बात करेंगे? कैन समबडी ट्राई एंड डू दिस फॉर मी? 1 2 3 4 पॉइंट्स. आपको आपने सबसे पहले सोचा कि आप डॉक्टर शिल्पा सुदन को फोन कर रहे हैं. आपको पता पड़ा कि शी इज अ वेरी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है? And from my website you get to know that I have done my studies from UK, and you get to know that I am been practicing near your bank. ठीक है? In a very good complex near your bank मेरी practice चलती है, and I am very busy and I have huge waiting all the time. I am rated 5-star. I mean the best doctor in gynecology in your vicinity. Okay. So now how will you make us phone call and what would be your script like? Can you take 1 minute and try this out on me? Anybody can try this out. Whoever wishes to. No force. तो आपको सिनेरियो समझ आया? I am a very big gynecologist, rated 5-star, a very busy one, have office near your bank, and I'm doing pretty good in my business. You have to do a cold call to me by preparing a rough script. Okay? Who would like to try this? Anybody in the class? Rocky, would you like to try this? Yeah, good. Yes, ma'am. Yes. Okay, let's try. You want to take a minute to prepare the script? I take a minute for 2 minutes. Yeah. Sure. Do that. Yeah, ma'am. Ready. Okay. Hello. Yes. Do you want us to switch on our cameras, or since it's a phone call, we'll keep our cameras off? No, switch on your camera. No problem. Okay, here you go. Start. Good morning, Silpa ji. Good morning. Yeah, I'm a Rocky Gupta from Axis Bank, and our branch is nearby your office. Okay. Raj Pyari, name is. Okay. Yeah, that's a good time. I will talk to you, ma'am. Only take a minutes only. Okay, not a problem. Tell me. Yeah, you are a very good doctor. I know your rating and all. See in your website. That is a good thing. Thank you so much. Yeah. Okay, ma'am. So basically, you know, all products. Sorry. Yeah, basically, you know, our bank is Axis Bank is one of the largest bank.
Yeah. So may I know your banking, which bank you're? Well, I bank with ICICI Bank as of now. I have my hospital's account with them. Hospital account. This is a corporate account, right? Yes. Yeah. Salary accounts and all with their ICICI Bank, right? Well, yeah, you can say that my company's account is with them. Salaries, I generally, give it to my chartered accountant to handle. So I really don't know. I think it is with ICICI only. I'm not very sure. Okay, no problem. Ma'am, I will tell you one thing. Your ICICI Bank is rate of interest and my bank rate of interest is slightly higher, and and some also new facilities, new products. If you like to allow me to briefly description for the product. Well, can we catch up for this because I'm currently having a patient in front of me, and probably you can give the details to my receptionist. And I'll go through it, and we can catch up once I go through it. Yeah, no problem. Can you provide me a time? Yeah, I Okay. can do that. What you can do is first you leave your details with my receptionist in my office, and probably we can catch up in 2 days. Thank you so much. Thank you. Right, friends. So what did we understand from this call? What were we trying to do here? We were trying to establish a rapport with the customer, right? So script जो हमको opening conversation की करनी थी, उसमें हमें क्या script बनाना था? Can somebody tell me? क्या स्क्रिप्ट बनानी थी हमें यहाँ ओपनिंग कन्वर्सेशन की और क्या वो बनाई गई थी यहाँ पे? So when we talk about making a script in an opening conversation, what are we trying to do here? We are trying to we are trying to make up our mind to talk to a doctor. Okay, so when I'm talking to a doctor, I certainly know that she has less time. At the same time, I also know that she is a busy doctor, right? So what do I do is I call her up and I prepare a rough script saying that dear madam, I have I am calling from Axis Bank, and we have a lot of accounts of all the important doctors of this city with our bank, and your account is one account which we have been trying to open since a lot of time now, right? And I wanted to meet you to provide certain details of the extra facility which I provide to my doctors of which are near my branch. Okay, what is a good time to meet you, or shall I leave the details with your secretary and then you can give me a time, something like this? ठीक है, everybody with me on this? Yes, ma'am. Rocky, it was a good try. You went ahead, right? Yes, ma'am. The only thing your script missed was that हम लोग डॉक्टर्स के लिए जो स्पेशली मेरे बैंक के पास हैं, उनके लिए कुछ ऐसा खास देते हैं जो मुझे बनाना है. You have to create that need. है ना? उसका ऑलरेडी अकाउंट होगा ही होगा किसी बैंक के साथ. इतनी बड़ी डॉक्टर है, तोप है वो, है ना? तो वो एक नीड क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट. हाँ जी, यस रॉकी. एक्चुअली आई एम ट्राइंग कि उसका मैं उसको अच्छा प्रोडक्ट पिच कर पाऊँ जो रिसेंटली बैंक के साथ है, तो थोड़ा सा मिसिंग था वो. हाँ बिल्कुल. और प्रोडक्ट पिचिंग पे ना रॉकी कभी भी कोल्ड कॉल पे नहीं आते, बिकॉज आप पहली बार बात कर रहे हो, है ना? तो प्रोडक्ट पिचिंग कब आएगी? हमारी सेकंड या थर्ड कॉल पे. ठीक है, पहली कॉल पे तो हम प्रोडक्ट पिचिंग पे बिल्कुल नहीं आएंगे. पहले हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि हमारी बैंक कुछ ऐसा देती है स्पेशली आप जैसे वेल टू डू डॉक्टर्स को, जो सारे डॉक्टर्स हमारी बैंक के पास जितने भी हैं उनका सबका अकाउंट हमारे पास है. तो आई एम रियली सरप्राइज कि आपका अकाउंट क्यों नहीं है, तो मैं आपसे मिलना चाहती थी. व्हाट इज अ गुड टाइम? वो बोलेगी मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लो. ठीक है मैडम, उनसे ले लूंगी. वो नहीं देगी, ऑब्वियसली वो बहुत बिजी है. तो आप क्या करोगे? आप उसकी सेक्रेटरी के पास जाओगे कि मेरी मैडम से बात हुई थी, मैडम ने कहा था मिलेंगी. तो उसकी सेक्रेटरी बोलेगी अच्छा आप बैठ जाओ. आप थोड़ी देर बैठे रहोगे पेशेंट्स के साथ, ठीक है ना? आजू बाजू पेशेंट्स होंगे.
वो आपको परेशान करेगी 15 मिनट, आधा घंटा, ऑब्वियसली वो बिजी है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट का अपॉइंटमेंट एक्स मैडम का अपॉइंटमेंट है जो डिले हो गया है और आधा घंटा मैडम फ्री हैं और आप बाहर बैठे हो, तो यू माइट गेट लकी, शी माइट कॉल यू इनसाइड। इफ नॉट, यू गो अगेन टुमारो। आरएम को हमेशा बेशरम रहना चाहिए प्लीज फ्रेंड्स। व्हेन यू आर ऑन अ कोल्ड कॉल, बहुत ज्यादा ईगो मत रखना कि मेरे को एक क्लाइंट अंदर नहीं बुला रहा, मैंने अपॉइंटमेंट भी लिया तो भी नहीं बुला रहा, ठीक है। You have to wait patiently. These are big shots which we are trying to target, right? So आप बैठे रहो, उस दिन नहीं बुलाया अगले दिन बुलाएगी, अगले दिन नहीं बुलाया उसकी रिसेप्शनिस्ट का नंबर ले लो, एक आध चॉकलेट दो, आज मेरे बेटे का बर्थडे था, बेटा होना हुआ आपका, बर्थडे मना लो, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट को बता रही हूँ, डॉक्टर को नहीं, ठीक है। एंड बोलो मैडम आपके लिए खास लाई हूँ, आज मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने सोचा आपको एक चॉकलेट दे दूं, खुश हो जाएगी। एक सॉफ्ट सेंटर बिल्ड हो जाएगा। सॉफ्ट सेंटर बिल्ड होने के बाद उसका नंबर ले लो, अब उसको फोन पे फॉलो अप करते रहो कि मैडम का नंबर अपॉइंटमेंट दिलवा दो ना, प्लीज डॉक्टर मैडम का अपॉइंटमेंट दिलवा दो ना। देखो आपकी वो एक अच्छी सी चॉकलेट कितना काम कर जाती है। एंड यू गेट दिस अपॉइंटमेंट एंड वंस यू आर फेस टू फेस, आप अपने बॉस को लेके जाइए इस कॉल पे, ठीक है। तो भले फर्स्ट कॉल है, आपका जो वीजी आपका जो टीम हेड होते हैं जो अगर आपको इसमें हेल्प करते हैं इस तरह की कॉल्स में, आप उनको भी लेके जाइए। आपको लगता है आपके अकेले से हो जाएगा, वेल एंड गुड। लगता है उनकी हेल्प चाहिए क्योंकि शी इज अ वेरी बिग डॉक्टर, शी माइट हैव सम एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स, लेके जाइए, शर्माइए मत, ठीक है। इज एवरीबॉडी विद मी टिल हियर? गुड। So please ensure to do these small things. A chocolate doesn't cost much. A small initiative of yours can help you for long. And जब तक ये रिसेप्शनिस्ट या अकाउंटेंट्स ये सब खुश नहीं हुए ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़े लोगों तक पहुंचना है तो ये छोटी छोटी टिप्स का ध्यान प्लीज रखिए। ओके, कहाँ थे हम लोग? Where is my PPT? Yes. Okay. Right. So the script of opening conversation is what we discussed right now. Depending on the client, we have to ensure that we talk. अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर की बातें, लॉयर है तो लॉयर की बातें, फिल्म स्टार है तो फिल्म स्टार की बातें, है ना। कुछ उस तरीके की बातें करनी है कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस, लाइक आप बॉम्बे में हो, अब फिल्म स्टार से सीधा तो पहुंचोगे नहीं, आप उसके सेक्रेटरी से मिलोगे। तो you have to call in such a way that automatically you tell him that other people have an account with you, or is there an extra facility which you're offering, something which creates that demand, which creates that inquisitiveness in their mind कि अच्छा what is access providing me, एक सेकंड के लिए भी बंदा सोचे कि अच्छा चलो बुला ही लेते हैं, सुन लेते हैं, शायद कुछ अच्छा दे ले, right? Something like that. Okay, next we'll talk about grooming and dressing up. Okay, a very important part of any RM, right? Indian and multinational banks are very particular on your dressing. Okay, so your flowery shades, your tops which have flowers on it, okay, something like what I'm wearing right now. So this is not big flowers, these are allowed. Big flowers, big prints are not allowed. You have to be soberly groomed. Okay, there's somebody who is on unmute. I'll have to check who is this. Yeah. Okay. So yes, somebody has raised his hand. Who is it? Juhi Gupta. Yeah, tell me, Juhi. मैम एक्चुअली मैं एक कॉल पे थी, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो अटेंडेंस मार्क का मैं बोल रही हूँ। Juhi, you cannot actually in the middle of the class do this. I'm really sorry, but at the end of the class, maybe at around 12, when we break for tea, you can remind me again. Yeah, thank you. Okay, ma'am. Thank you so much. Welcome. Okay, so where were we? Yeah, yes. So the next step is to start your grooming. Okay, you are going to convince the prospect to invest in his hard-earned money with you. The prospect will not like to discuss this with a person who doesn't look professional, who does not look in control, who does not look trustworthy. इन चारों में से मुझे बताओ ट्रस्टवर्दी कौन सा आदमी लग रहा है? मैम फोर्थ नंबर। मैम फोर्थ नंबर, right? है ना? Why is he looking well groomed? Because his hairs are correct. He's wearing a proper blazer. He's carrying a good smile.
He's wearing a proper watch and he is looking perfect, right? In his dressing. He's clean shaven. I mean, clean shaven as in uski shave properly ki hui hai. Unlike the first guy who has a lot of beard and who's just wearing a shirt, he's not wearing a tie. Second guy is wearing a shirt and tie, but his hair is not dressed up properly. His blazer is open. Yes, he looks more like a Lala than he's looking like a banker, right? The third guy is looking more of a model. His hairs are all spiky, right? And he's looking as if he's going in a casual party. Among all these three, the fourth guy is looking perfectly groomed. He's looking as if he's come to meet us and I would trust him for my money, right? Are you all with me on this? Right. Yes. Good. So creating a great first impression. First impressions are the almost instant conclusions we draw when meeting someone for the first time. Impressions are based on external and internal factors. So external factors क्या होते हैं? High standards of grooming and hygiene. Okay. You carry a good perfume. You smell good. The first thing, when you enter any cabin, सबसे पहले हमारी smell अच्छी होनी चाहिए. Okay. You should be wearing a good perfume. Okay. बहुत तेज नहीं, बहुत कम नहीं और ऐसा भी नहीं कि आप घुसो तो एकदम भौचाल आ जाए कि वो गुलदस्ता आ रहा है, ऐसा भी नहीं. But at the same time, you should smell good, decent, hygienic. Your body language should be positive. You should shake your hand. Your posture should be confident. Your gestures should be smiling, right? So that the customer is convinced and he to talk to you at least. Okay. So your confidence, your knowledge, your voice and tone are all these factors which impact your first impression. And remember, my dear friends, first impression can be the last impressions, right? So once आपका अगर पहला impression बिगड़ गया तो वो आपको अगली कॉल पे नहीं बुलाएगा. So very very important to ensure कि जो आप एक first time client से मिलते हैं एकदम धुआंधार आपका impression होना चाहिए. Okay. So what is power dressing and grooming for men? Your outfit has to be formal, full sleeves, white, blue or gray shirt, coordinating tie, dark colored trousers, coordinated blazer based on weather. So you have, nowadays you have summer blazers also, which are made of those spun. Okay, so you get those also in light shades and dark shades as well. So one is your blazer, which is obviously winters में तो आपको पहनना ही है. बट अगर आप समर में भी किसी सीनियर आदमी से मिलने जा रहे हो तो देन देयर आर समर ब्लेजर्स आल्सो व्हिच कम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. दीज आर मेड ऑफ दिस स्पन मटेरियल जो ठंडा रहता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो. दे लुक वेरी गुड, राइट? दी शुड बी वेल फिटिंग, नॉट टू लूज, नॉट टू टाइट, एंड दे शुड बी ऑलवेज washed and ironed clothes. Okay, so you should always look good. Shoes should be polished and you should be, this is how your hairstyle should be. Okay, no stubble, no long or spiky hairs. Okay. Your moustache, trimmed moustache, neatly cut hair should be what should be the way you should carry yourself. Okay. Your nails should not be very long. They should not be bitten also. Okay. Finger and toenails should be clean, short and presentable. This is a very important part, my dear friends. होता क्या है कि जब हम क्लाइंट के पास जाके बैठ जाते हैं उसके सामने, है ना, कई बार क्लाइंट का फोन चल रहा होता है, कई बार क्या आजकल तो मैक्सिमम यही होता है कि आप बैठे रहोगे, क्लाइंट अपने फोन पे 5-5, 10-10 मिनट लगे रहेगा. ऑब्वियसली हम लोग कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो है नहीं या कोई वीआईपी तो है नहीं कि क्लाइंट हमारे लिए तुरंत अपना फोन रख दे. वी विल हैव टू बेयर विद इट, वी विल हैव टू सी टू इट. जब तक उसका फोन वो रखे तब तक हम उसके सामने बैठे हुए हैं, राइट? हम उसकी केबिन में बैठे हैं, वो अपनी चेयर पे बैठा है, हम उसके सामने वाली चेयर पे बैठे हैं. अब जितनी देर हम बैठे हैं वो फोन कर रहा है पर वो हमें देख सकता है, राइट? वो हमें देख रहा है, हमारा अटायर देख रहा है, हमारी लुक्स देख रहा है, हमारे छोटी छोटी चीजें दिखती हैं. नेल्स गंदे हैं, अगर हमारी वॉच एकदम मैली सी हो रही है, उसका स्ट्रैप मैला हो रहा है, हमारी शर्ट गंदी सी हो रही है, or else the worst which happens in a lot of male colleagues is that they do not put their socks for washing. The socks smell, right?
और जनरली आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑफिस में ये रूल होता है कि आप जूते बाहर उतार के आइए, तो आपके सॉक्स एकदम बढ़िया वाली स्मेल छोड़ते हैं. सो प्लीज ensure your clothes are washed and ironed, your nails are cut, your hands look good, because ये सब जगह पे आपका बहुत ज्यादा कस्टमर का ध्यान जाता है. प्लीज बी वेल groomed. Please ensure you do timely manicures and pedicures, right? Because these are things which will impact your impressions. And जब तक वो impression client के मन में सही नहीं बैठा ना, he would not trust you with his money, right? Because you are a senior person who is coming from Axis Bank for a client. So Axis Bank से कोई senior आदमी उनसे मिलने आया है, तो senior जैसा दिखना चाहिए ना, right? He should look good. He should be well groomed. So these are some guidelines for your shirts, your colors, patterns which are acceptable. These are certain colors and certain patterns which are acceptable for you to wear these shirts. Okay? Colors or patterns which are to be avoided. Right? A black color, a bold and bright color, a thick stripe, a bold check. Okay? These should not be worn. Right? You should wear these simple colors. Subtle pastel color बोलते हैं ना, उस तरीके के colors look good. Guidelines for trousers. Neatly ironed trousers. Generally, all dark colors are acceptable. Have at least one pair of black trousers. Ensure that trousers fit well and are comfortable. Hemline should cover the heel of the shoe. ठीक है, आपका heel of the shoe cover होना चाहिए, ऊपर मोड़ के नहीं जाएंगे आप. Generally, lot of males have this tendency कि आप उसे fold कर लेते हैं. Jeans को तो हम generally ऐसा कर लेते हैं. Don't do that, okay? Heels के ऊपर आपका hemline होना चाहिए. It should look good. Okay. Avoid jeans, chinos, and corduroys. Avoid white or off-white color of trousers. Trousers with print or pleats should be avoided. Trousers shouldn't bunch up at ankles. Trousers should not be too tight. ठीक है, ankle fit नहीं चाहिए. फिर at the same time पूरा वो skin fit नहीं चाहिए. It has to be decent fit. Okay. जो proper एक trouser का pant का fitting होता है वैसा वाला चाहिए. And the heel should be covering. Okay, hemline should be covering the heel. Guidelines for accessories. Choose conservative designs. Top button closed. Your tie should match your shirt. Dark shirt, light colored tie. The knot should be perfect triangle. Knot में गड़बड़ मत करना. Neat knot होनी चाहिए. Belts. A gold belt is a must to complement a corporate look. A good belt, sorry. A good belt is a must to complement a corporate look. Avoid showy buckles, जैसा कि second photo में दिखाया है. Match your belt with your shoes, black or brown, right? Wear a good pair of leather shoes, black, brown, tan shoes. Shoes must be polished every day. Ensure that the toe and heel areas are not badly worn out. ठीक है, आपके शूज रोज पॉलिश करके निकलिए आप घर से. और अगर आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो अपनी कार में एक रख लीजिए पॉलिश. जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके बैग में एक डीओ होना चाहिए, वैसे ही आपके कार में एक शू पॉलिश होनी चाहिए. इस तरह की 2-3 टाइज होनी चाहिए कि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जा रहे हैं बाहर टाई बांध सकते हैं. ठीक है, सो दीज हाइजीन आइटम्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कार्स बोनट. इट शुड बी कार की ड्रॉर के अंदर आप रख दीजिए. जब जब लगेगा पहनिए और फिर क्लाइंट से मिलिए. ओके. वॉचेस. Preferably wear leather strap watch. If you are wearing a metal strap watch, make sure it fits the wrist well. डेली हिलती नहीं रहनी चाहिए. आप बात करें क्लाइंट से और आपकी वॉच हिल रही हो, that doesn't look good. Again, some guidelines for accessories. No flashy frames of spectacles. Use conservative frames, right? So second wala is right, first wala is not correct. Neck chain should be visible. Don't wear earrings. Okay. नेक चेन को भी बाहर should not be visible. नेक चेन को भी बाहर निकाल के नहीं दिखाना है like बप्पी लहरी. Okay. You have to ensure that your chain is inside. You don't wear earrings. Okay. Earrings are not a part of an RM's fashion accessory, please. Okay. Keep helmet down away when meeting with customer. हेलमेट आप बाहर रख के जाइए अपना. अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो कस्टमर के केबिन
Ma'am, you're not audible. Hello. 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 I'm sorry, I got disconnected. Am I audible now? Yes, ma'am. Yes, Where- audible. Thank you. So where was I on the formal outfit on women, right? It got disconnected. Right. Can you see the screen? Yes, ma'am. No, ma'am. No, is it? No. Arindam. But we can see the screen. I'll share it again in that case. Yes. Okay, can you see it now? Can you see the screen now, friends? No, ma'am. Arindam, then it's a problem at your end, I guess, because everybody else is able to see the screen. आप उसको Yes, I can see now. disconnect करके reconnect करिए. Okay, so we were talking about formal outfit for power dressing and grooming for women. We discussed about men.
For women, Indian salwar kameez or sari, depending on the client you're going to meet. Okay, formal trousers, suits, jackets are optional. So you can wear blazer and pant as well, depending on the client you're meeting. So for example, if you're going to meet, say a corporate person, okay, आप Infosys में जा रहे हैं या TCS में जा रहे हैं और वहां के कोई सीनियर प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू वेयर ब्लेजर एंड पैंट्स. ओके, अगर आप मान लीजिए किसी बिग टाइम स्मॉल ट्रेडर से मिल रहे हैं, मान लीजिए आप एक डायमंड मर्चेंट को मिल रहे हैं या टेक्सटाइल ओनर को मिल रहे हैं, या आप किसी बहुत ही अमीर आदमी की वाइफ को मिल रहे हैं, शी इज हाउस वाइफ बट शी टेक्स केयर ऑफ द entire business staying at home. So depending upon where you are meeting and what kind of customer you are meeting, your dress should change. Okay, so Indian salwar kameez और साड़ी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उस तरीके के कस्टमर को मिलने जा रहे हैं जो थोड़ा सा देसी है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है. जहाँ पे भी जिस भी ऑफिस में कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर है वहां पे प्लीज आप ब्लेजर पहन के जाइए. ठीक है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू इन अ कॉर्पोरेट वेयर दीज क्लोथ्स एंड गो. ठीक है, you catch the connect with the client. So it should be your long or short sleeve shirts are again formal shirts. Your blouses with or without collar, depending upon, it should be formal and decent. They should be well fitting, not too loose, not too tight. Always washed and ironed clothes. Avoid short skirts, cutouts and tights. Okay, this should be avoided. This is the kind of hairstyle which is allowed. No colored hair, no long open hair, no frizzy hair. Okay, neatly tied hair, not covering face. No long bitten nails. ठीक है, no long nails, no bitten nails. Avoid flashy, chipped off nail paints. Okay. Finger and toenails clean, short and presentable. ठीक है, something like in the last picture. If you're keeping your hair open, then something like in the second picture, third picture, neatly tied hair, not covering face. अगर आपको खोलने भी हैं तो वो इस तरह से neatly pinned up होने चाहिए, पर बहुत बड़े हैं तो आप उनको बांध के जाइए वरना आपको बहुत गर्मी लगेगी. Shoes with 1.5 inch heels are standard. You may wear a pair with smaller heels or flats. ठीक है, अगर आप comfortable नहीं है तो आप छोटी heels पहन सकती हैं, but थोड़ी heel is advisable. It enhances the personality of a person who is walking in that heels. So little heels, you can go for block heels to be comfortable. Wear a black or brown pair. Make sure your shoes are polished and your heels are intact. You are not supposed to wear these kind of chappals, okay? Multicolor chappal, shimmer sandals, white color sandals, as they get dirty easily. If you do clean them well, then only wear them, but shimmery please avoid कीजिए. ठीक है, थोड़ा official वाला, formal वाला use कीजिए. Sneakers, platform shoes, sandals and slippers are not allowed. Okay, so this you really need to understand. यहाँ पे you have to ensure you follow this. Okay, so for accessories, these are the guidelines. For bags, you have to ensure your bags, you carry black or brown bag. You brown or tan colored mid-size bag. Apart from your working bag, if you're carrying an additional bag, preferably carry a black or brown one. Jewelry, keep it simple, not chunky. Do not wear more than 5 pieces of jewelry in a corporate environment. Sleek watch, sleek necklace, a pair of earrings, preferably studs, not more than 1 finger ring. Yes, this is a major problem in girls. You wear a lot of finger rings. They don't look professional, my dear friends. You need to ensure एक, ज्यादा से ज्यादा 2, मतलब वो भी अलग अलग हाथ में. ठीक है, बहुत सारी वो ट्रक वालों जैसे please don't wear. A simple bracelet or a few bangles depending on the attire. ठीक है, depending upon the attire आप जिस market में हैं. ठीक है, so if you're posted in a south market, okay, it's preferable that you wear a sari. You wear neat small gold earrings, you wear neat hairstyle, you put a bindi. Okay? If you're in a market of Gujarat,
it's preferable for people to get allocated to you that you wear a suit. Okay. And a simple bracelet, simple jewelry. ठीक है. So आपके इस मार्केट में है, कौन सी जगह पे है, उससे भी अटायर बहुत डिपेंड करता है. आप कॉर्पोरेट से मिलने जा रहे हैं, preferably wear a blazer, right? What to avoid? Heavy makeup, red and purple lipstick, false eyelashes. Please don't wear false eyelashes and go to a customer, okay? Nail art, please, no nail art, okay? That's for weddings or for parties, not for formal meeting a client. Strong perfumed hair oil. Yeah, that's also a very, unique thing which people do. They put on hair oils like jasmine oil or your, oils which really smell a lot. Don't put that. Strong contrast in clothes like the first photo. Okay. Purple pant with green top with red chunni. Don't do that. Long chain. No, it's a party wear. Okay. Sharp contrast in clothes, huge prints, बहुत बड़े बड़े block flowers, बड़े बड़े block prints, stock embroideries, too many frills, creased or unwashed clothes. All this should be avoided. Loud chunky jewelry or bracelets and dangling earrings. All this again should be avoided. जो ये नीचे आपको सेट और चूड़ी दिख रही है उस तरीके का आपको कुछ भी नहीं पहनना. Simple, small, sober jewelry. Use light and natural makeup. Flat color or small print outfits, something like these. Okay, everybody with me on this? Clear? Okay. Most important is wear a smile, okay? अगर आप स्माइल नहीं करेंगे तो आप क्लाइंट को कन्विंस कैसे करेंगे कि आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, ओके? सो वेयर अ कॉन्फिडेंट स्माइल एंड यू आर ऑल सॉर्टेड. ठीक है, अ डिसेंट ड्रेस एंड अ कॉन्फिडेंट स्माइल. Approaching prospects and probing, okay? So what do we do when we approach a prospect and how do we probe? Okay, that's what we learn now. And we learn that हम उनसे कौन से questions पूछेंगे. We'll have to take a break at 12. So we'll try and cover this part and then move further at 12:15. Okay, so break is at 12. We have 20 minutes more to go. So we'll try and do a little part of approaching prospects and probing. So first of all, a confident handshake is how you approach a prospect. Hello, sir. Myself, Shantanu from, whichever bank you're working. Very confidently you approach the client with a smile on your face. Okay, that's how you do it. Right. Can you see this video? Yes, ma'am. Can you see this video? Or do you want me to share it? Can you hear it also? No, ma'am. There is no sound. There's no sound, is it? Hold on. Just a second, I'm trying to attach that video. Just a second. Okay, can you see it now? Is it audible?
No, no. No. Is it audible now? No. No, ma'am. No, ma'am. No, it's not audible. But you can see the screen, is it? Yes, ma'am. Ma'am, no audio. Ma'am, it is not audible. So you're able to hear see it, but not able to hear it, right? Correct, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in that case, what we can do is you can see this video separately. It basically is the video's name is 5 Steps to a Power Handshake. Okay, you can go to YouTube and search this out. 5 steps for a power handshake. Okay, so what they're trying to say is that when you do a handshake to your client, one, it has to be, it has to be with a smile. You have to be confident. You have to ensure that you are not in a very close range with the customer. ओके एक थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो आप उसके मी जोन में घुस जाओगे, विच इज नॉट गुड. अ लिटिल डिस्टेंस, अदरवाइज यू विल मेक हिम अफ्रेड. And it should be, stand when shaking hands, be the first one to offer. Give a firm and full handshake, not hard, not half. Okay, tight नहीं देना और आधा भी नहीं देना, जरा सा करके प्रॉपर देना है, हल्का सा. ठीक है. Look into the eye and smile. Never look at the hand. Keep a comfortable physical distance. बहुत पास मत चले जाओ क्लाइंट के. ठीक है. Never look into, look into the eye. हाथ पे मत देखते रहो. ठीक है. That shows your confidence. कई बार आप हाथ मिलाते हो, अपने हाथ को देख रहे होते हो. Don't do that. ठीक है. Everybody with me till here.
Right? Is the slides audible? Oh, sorry, visible? Is the slide visible? Am I audible? All good? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Right. So next comes how to exchange your visiting card. So as you see in the photograph, you have to catch your visiting card with both of your hands, and smilingly with grace you have to give with both your hands to the customer. बहुत ही अच्छे से दोनों हाथों से आप कार्ड को लेंगे और कस्टमर को देंगे. ठीक है? That's how this should go. Always carry several fresh clean business cards. Okay? किसी पे अचार नहीं लगा होना चाहिए, किसी पे गंदगी नहीं होनी चाहिए. आपका जो डब्बा है उसको आप इस तरह से सेफ रखिए कि आपका वो बिल्कुल भी गंदा ना हो. फ्रेश कार्ड्स आपके पास आपकी कार में हमेशा होने चाहिए. ठीक है? Always carry several fresh clean business cards. Hand over the card with both the hands. Hand over with face up. Text facing customer for easy reading. ठीक है? ऐसे नहीं कि टेक्स्ट आपको फेस कर रहा है. टेक्स्ट शुड बी फेसिंग द कस्टमर. receive the card with right hand or both hands. आप अपना कार्ड दोगे तो कस्टमर भी आपको अपना कार्ड देगा. हमेशा राइट हैंड से लो या दोनों हैंड से लो. Always keep business cards in the cards case. ठीक है? इधर उधर मत रखो because वो dirty हो सकते हैं. Keep them in cards case. Okay? Leverage your sales aid now. The priority welcome kit. You have a warm welcome kit. Welcome elements required to use an account. Key features, benefits of the product. ये सारा आपके पास brochure में होता है. The priority welcome kit, a premium kit designed to welcome our new clients to the world of priority banking. Banking excellence coupled with finest life experiences. ये पूरा आपके पास ready-made written में है, वो आप अपने पास रखो. जब भी आप customer को मिलते हो, you can hand this over to him. The priority microsite, a simple and elegant medium to showcase the priority proposition to our customers, which is also available on the site. You can share this leaflet with them. Make sure your customers have contact details of you at all points in time. अपना contact detail उनको देना मत भूलना. ठीक है? Other sales aid which you can use for customers is the priority audio visual, the tool to showcase the proposition to our customers, right? Download the same from Priority Lighthouse. WhatsApp version is also available. Product pitch deck, that is also there. Live your success wala, and enable to insist you to explain the details of proposition to your customers. Again, download the same on Priority Lighthouse and keep it on your WhatsApp in understarred messages, ताकि आप जब भी client को मिलो आप तुरंत दे सको. Just pass it on to his WhatsApp. Leaflet, a sales aid with details of the proposition that can be left with the customer once you leave from the call with your name and your visiting card stapled on it. Indent from Rishta P2P purchase catalog, वो ये इसका path है जहाँ पे आपको leaflet का print out भी मिल जाएगा. Brochure, one pager जो है Axis Bank का, और आपका visiting card. ठीक है? Hand over your priority RM visiting card when meeting your customer. Sales aid with details of proposition that can be left with the customer is available on this path. And again, आपके visiting cards का अगर आपका खत्म हो जाते हैं तो you can raise a request on this path to generate new visiting cards. Axis One app, Ma'am, your voice is breaking up. visiting card. Yeah, is it better now? Am I audible better now? Yes, ma'am. Yes, ma'am, better. Yeah. Okay, so
What were we discussing? Just a second. Yeah, so we were discussing that if your visiting cards get over, you have to go to this Access One app and order new ones. You should always have your visiting cards because that is one place where the client can contact you. आपका number उस पे है, ठीक है? और Priority Banking की stationery जो है, you can order your stationery and product brochures from Priority Lighthouse. Please do not print them like this and take, ठीक है? क्योंकि वो ठीक से दिखेंगे भी नहीं और ब्लैक एंड व्हाइट वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगेंगे. आप प्रायोरिटी लाइट हाउस पे जाइए और ऑर्डर प्लेस कीजिए. आपको जितनी स्टेशनरी चाहिए आपके जो भी आपने अपना एड्रेस दिया है वहां पे आपको आ जाएगी, ठीक है? सो प्लीज इंश्योर यूज ओरिजिनल स्टेशनरी. Do not carry a printout of brochures. Do not carry printout of all, your items which tell you what facilities we are offering. Okay. Carry a set of all forms that may be required during the meeting, but brochure and all product related details, please carry originals. Any other personalized items that the customer is requested to bring, new checkbook or passbook, deposit slip, etc. All this, please carry the item with you. Okay. So we'll take a break now and we'll come back at around 12:15. And we'll start from here, the 3 pillars of building rapport. Okay. This is an important topic and cannot be covered in 5 minutes. So it's better we take a break now and come back at 12:15. See you friends at 12:15. मैम राजेश बोल रहा हूँ. हाँ जी मैम बोलिए राजेश बोल राजेश, रहा हूँ. बोलिए. एक्चुअली मैम अभी मेरा एक जस्ट कॉल है अकाउंट रिलेटेड, तो जी आई थिंक मुझे थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट होगा मैम अटेंड करने ठीक में. है, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है मैम. ओके ओके मैम, थैंक यू. मैम जूही. Yeah, Juhi, I have to mark your attendance and I have to mark in attendance of Nitesh Kumar as well. I'll do that. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. See you at 12:15, friends. Join back at 12:15. Till that, in the meanwhile, you can be in the meeting. Switch off your camera and switch off your mics.
Hi friends, are we back? Yes, ma'am. Right. Cool. So shall we start? Are you all fresh with a tea break? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Right. So here we go again. So now this session will last till 2 o'clock and then we'll have a lunch break. Okay. So I know it's very tedious to, sit and listen continuously, because if, what we can even do is we can play a game for a while so that everybody's charged up. Do you want to do that before we restart? Up to my audience. Do you want to play a game before we restart? Okay. So then I would like, if we will play a game, then I would like everybody to switch on their cameras and switch on their mics first. Okay, so we'll play a game to charge up ourselves, because this is slightly, it gets boring when somebody is continuously talking and you just have to listen. Okay, everybody, please switch on your cameras, switch on your mics. If you're not outside and you're in office, when there is not a lot of sound from the background, please switch on your mics or don't. Okay, switch on your cameras and mics. Only they will play who are inside the office or inside a silent zone. Okay, at your home also you can play, but your background voice should not be there. Okay, all ready? All ready for the game? Yes. Okay. Yes. So what we have to do in this game is, Suchanta Acharya, are you playing with us? In case you're playing, please switch on your mic and your right. No, your camera is not on. Your camera is not on, Mr. Acharya. Right. So the game is, you have to do what I do and you have to say what I say. Okay. The first is a practice session. What you have to do is, when I say hands up, you have to say hands up and do hands up. Okay. So hands up, hands down, hands left, hands right. And you have to say with me. Okay. So when I say hands up, all of you will say hands up. When I say hands down, you will do hands down. And when I say hands left, you will say hands left and take it left. When I say hands right, you will take hands right and do it right. Got it, everyone? This is a practice one. Okay. Yes, ma'am. So ready, steady, hands up. You have to say hands up. Okay. I cannot hear. Everybody together. You have to do what I do and say what I say. Okay, instructions are clear. Do what I do, say what I say. Hands up. Hands up. Hands up. Hands down. Hands Hands down. down. Hands left. Hands left. Hands right. Hands right. I cannot Hands hear. right. Dhaval Kumar, please speak. Hands up. Are you disqualified? Okay, if you don't do it, I'll disqualify you. अभी तो game practice कर रहे हैं, start नहीं हुआ है. ठीक है? Hands up. Hands up. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Hands down. Hands down. Hands left. Hands Hands left. left. Hands left. Kripal Dikshit, you're not speaking. Hands right. Hands right. Hands right. Right. Okay, now the actual part of the game. You have to do what I do and say the opposite. Okay? Okay. You have to do what I do and you have to say the opposite. So when I do this, you have to say hands down and do hands up. So do hands up, but say hands down. Okay. Got it? Yes. Everyone? Okay, Yes. start. Mhm. Hands up. Hands down. Hands down. Hands down. Hands left. Hands Hands right. right. Hands right. Hands down. Hands up. Hands up. Yes. up. So we have 4 people who are already out. So hands down में आपको hands up करना था और hands Yes, down ma'am. बोलना था. Okay, retry. Hmm. Hands down. Hands up. Hands up. Hands up की down.
You have to say up and put your hands down. Do what I do. Say the opposite. Okay? Hands up. Hands down. Hands Hands down. down. Hands left. Hands Hands right. right. Hands right. Hands right. Hands Hands left. Hands left. Hands down. Hands Hands up. up. Hands up. Right. Now you got it. Okay. So now you have to do the opposite and say what I say. Okay, you have to say what I say, but you have to do the opposite, and I'll not do anything. Okay, so that you do it correct. Okay, hands up. Hands down. Down. Okay, but you have to do what? You have to do what I say. Hmm. You have to do opposite and say what I say. Okay, hands down, but your hands will go up. Hands left, your hands will go right. You will say hands left. ठीक है? Okay, then only challenging होगा ना, easy होगा तो फिर बात ही क्या है, फिर हम आ रहे हैं किस काम के, है कि नहीं? Right. So, what are we doing? You have to do the opposite and say what I say. So say what I say, but do the opposite. Hands up. Hands Hands down. up. Hands up. Yes, you have to Hands say down. hands up, but do hands down. He's right. Okay, hands left. Hands right. Hands right. Right. Hands right. Hands Hands right. down. Hands down. Hands down. Right. Hands Hands up. up. Hands Hands down. up. Hands down. Okay. Okay. Now to actually check each one and put you right or wrong. Hands left. Hands right. Hands right. Hands Right. down. Hands up. Right. Hands Hands down. down. Hands down. Tony, still you are not doing it. You're just saying it. I cannot see your hands. I can only see your face. हाथ तो दिखाओ भाई, ऐसे कैसे पता Yes, पड़ेगा? ma'am. एक तो वीडियो पे ऊपर से गेम खेल रहे हैं, कितना मुश्किल है. खाली ऊपर का पार्ट दिखता है, so I cannot make you jump. Otherwise, I made you jump up, jump down, jump left. But I cannot do that, right? Yes, Okay, ma'am. hands down. Hands up. Right, Hands so down. everybody got it, and I think everybody is now charged up. Let's go back. You want to play one more game, or you want to go back to our lecture? I think we'll go back to our lecture and we'll play one more game in the evening at 5:45, and I'll see you for NPS. Right? So let's Okay, kill ma'am. it fast. It's 12:15 or 12:30 now, and we'll try and finish it by 1:45 too. Okay? Shall we start? Okay, ma'am. Great. Yes, Okay, so you can see the slide which I have presented. 3 pillars of building Yeah, rapport. design. You can see this? दिख रहा है ना? Slide दिख रहा है Yes, कि ma'am. नहीं? दिख रहा है. Okay. Right. कब कितने से तो? अभी नहीं दिख रहा है मैम. अब नहीं दिख रहा है? Okay. कल देखी या कौन ना बताएगा? अब दिख रहा है. Please mute your microphones, friends. We have played the game. Oh God, where is this screen? Why is it not coming? तो की अकाउंट चला दिया अकाउंट Okay, can you see the screen now? Is the Yes. screen visible? Right. So the 3 pillars of building rapport with customers are you. Establish that you are the person with knowledge, skills, expertise and authority to take decisions. Right? ये मैंने कल भी बताया था कि आपको अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना है कि मैं ही हूँ एक्सिस बैंक का सीनियर बंदा, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बंदा हूँ, आपके लिए आप बेस्ट चीज कर सकता हूँ. That authority should come. Right? मैं ही हूँ वो जो आके आपके लिए इतना अच्छा काम करूंगी कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, या whatever. You have to show yourself as a senior person of Axis Bank, and you have to then customize your product, focusing on solving the customer's need, and you have to build. Please mute your mics. Just a second, let me mute mics for everyone. Whose mic is on? Please mute your mic. कोई भी है जिसका माइक ऑन है? यस, इंद्रजीत रॉय का.
I'll mute it for him. Okay. Anybody else who is on unmute, please mute your mics. Good. Hanji, so we were talking about 3 pillars. So you, your product, and your bank. So you have to build that your bank is stable and trustworthy, and you have to think from the customer's perspective. That why he will think that क्यों आया ये RM मेरे पास, why ये प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, एक्सिस बैंक के पास मैं क्यों जाऊं. तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए. ठीक है. सो व्हाट आर 3 पिलर्स? यू, योर प्रोडक्ट एंड योर बैंक. सो ब्रांड यू. सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को बेचना है. ठीक है ना. ऑप्शन 1 है, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज सुधीर. Option, good evening sir, I'm Sudhir from Axis Bank and I'm your priority banking relationship manager. I'll be your single point of contact for all your banking needs. Brand yourself with value statements. I work with select affluent customers of Pali Hill branch like yourself. I help them manage their day-to-day banking needs and grow their wealth. I have over 6 years of experience in managing affluent customers like you. I have earlier worked with HDFC Bank and Kotak Mahindra Bank. So सबसे पहले हमको अपने आप को एक ऐसी एंटिटी बनाना है जिसको क्लाइंट कन्विंसिंगली एक्सेप्ट कर सके. ठीक है. अब ये फोटो में से RM कौन है? बताओ मुझे, ये फोटो में से रिलेशनशिप मैनेजर कौन सा है? मैम यंग पर्सन है. यंग पर्सन है RM या वो चश्मे वाला RM है? वो टाई वाले है ना, वो चश्मे वाले वही है. वो RM है, राइट. फिर ठीक है. मुझे लगा आप कहीं ये ना समझ लिए कि यंग है तो वो RM है. वो क्लाइंट है, यंग है, पर he is a very rich guy and that person who is wearing specs is an RM, because RM is actually a senior role. So you can grow old in this role. आपका जितना अच्छा बुक होता जाता है उतने आप सीनियर RM बनते जाते हो, and continue being an RM till the time you want. So you can be an RM, you can be an RM head, you can be priority, then आपका बरकंडी है. So RM अलग अलग तरीके के होते हैं. So आप बेसिक से सीनियर से और अलग HNI, then super HNI में भी जा सकते हो. So RM is one thing which lot of banks have RMs as their designation is directors, their designations is vice president. So RM is a very senior role, friends, and it can continue. So if you're doing good as an RM, you can actually continue as an RM in different banks, in the same bank at different levels. This RM, Barkandi RM, and you can grow, keep growing. It's a very good field, I should say. So if you enjoy being an RM, nothing like it. Right. So introducing others. At times you may go for customer meetings with your branch head or a product manager, or a customer may walk into your branch. Okay? So you not only have to introduce yourself, but you have to introduce others as well. Introduce a customer to a colleague or a branch head. Introduce a person with senior rank to a person with a lower rank. Okay? Use a person's first name only if you are permitted to do so. Avoid commanding people in the introduction. Okay? So you can always say that this is Shilpa. She works with me. She's my colleague. She works in this department. Whose mic is on? Please mute your mic, friend. Yeah. So when you're introducing a person, you can always say that, this is my colleague Shilpa and she works in this department. You need not say my designation. Okay? Unless I'm very senior, I am a country head or a cluster head, or I have come to your branch to meet this specific person for some specific problem of his, avoid doing that. Okay? You can just say that, please meet Shilpa. She works in our forest department. That is sufficient. You need not tell my ranking. Okay? To the client in the initial conversation. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Good. How to build trust? So build a rapport. Make an effort to get to know customer better. Share information about yourself, who you are, how many people do you have in a family, about your family,
It builds trust as you may find some commonalities. Okay. So it might happen the customer has, kids going into the similar school your kids is going, or in the similar vicinity your kids are going. It can be possible that the customer is passionate about cars as you are. Maybe you are passionate about cars. Maybe you're passionate about cricket. Maybe you're passionate about dancing. Maybe you're passionate about music. You never know what clicks with the client. So always try and discuss things about the client, about his family, about your family. जब आप अपनी बातें बताओगे तभी क्लाइंट खुलेगा, तब वो अपनी बातें बताएगा, राइट? लाइक एनी इवेंट, मान लीजिए आपके वहां पे सोनू निगम आए हुए हैं, ठीक है ना, एंड उनकी कोई बहुत अच्छी म्यूजिक इवेंट थी, और आपने क्लाइंट से बात की कि आई द अदर डे आई हैड बीन टू दिस event and I saw lot of affluent people like you and people like me literally enjoying Sonu Nigam's show, and I really love Sonu Nigam, and you start from Sonu Nigam and you end up to maybe Amitabh Bachchan, or end up to say cricketing, or maybe you can end up to a music show, whatever. You find out that the customer likes theater. So आपकी ना बात शुरू होती है, बात करोगे तो बात बढ़ेगी. मतलब I know it's not relevant in a talk of a bank to talk about Sonu Nigam, but what we are trying to do here is we are trying to bring attention of the customer to your liking and find out what is his liking, so that he opens up कि okay मेरी family में तो छोटे बच्चे हैं, they are not interested in Sonu Nigam, they are only interested in English songs or whatever he tells you, and you build upon your story from there, right? So build your brand, share your credentials by promoting your skills and knowledge on managing customers, portfolios, banking transactions, and proficient in managing customer investment as you are. Okay. If you are IRDA certified, you are NISM certified, so that you have to ensure you are right, and you should tell the client that you have these skills and you have to promote these skills. It's basically like selling yourself, आपकी personality उसको जचनी चाहिए, something like that. Benefits of priority banking आपको से बताने हैं to build that trust. You have to, tell him you should be thankful to him for being a part of priority banking, which is a premium program of Axis Bank. And we always work to provide you with banking excellence coupled with finest life experiences. This proposition has been tailored and designed keeping in mind affluent customers of Axis Bank, giving them unparalleled banking services. So you have to tell that to the client. Then, what comes to the mind of the client is why Axis Bank, tell him that we have large ATM networks. We have third largest private sector bank. We are awarded as the best innovation in banks in India by BT or KPMG Best Bank Awards, right? So something like this, you will have to tell him in order to build that trust. ठीक है ना, हमारे लिए Axis Bank, we all know it's a big bank. It has been into the system since so long and everything. But what happens in a situation where, the customer is only banking with multinational banks, or customer is only banking with, nationalized banks, State Bank, Bank of Baroda, such banks. तो इस टाइप के कस्टमर को एक्सिस बैंक के लिए ट्रस्ट जगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है. So we have to do that, right? Right. How do I create a positive era? So walk with confidence. Okay, again, there is a video. I don't know why I'm not able to share this video voice. Can I try it again? There is a video here again, but I don't know why I was not able to share it at that time. Just a second, hold on. Okay, now tell me whether you get this voice and you can see this video. Okay, I'll try once again, but abhi bhi nahi hua, so I'll give you the link.
Can you see this video now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now tell me whether you're able to hear it or not. No, ma'am. No, ma'am. It's not audible, ma'am. Why is the volume not coming? I'm not able to understand. What is the problem? Just a second. Still not audible. Okay, I'm trying. Just a second. Hold on. वॉक इन करते हैं ना, भले वो कोई मीटिंग हो, भले वो कोई क्लासरूम हो, कोई इंटरव्यू, Is it audible now? किसी डेट पे जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, तो लोगों ने सिर्फ आपके वॉक के बेसिस पे सबकॉन्शियसली आपके बारे में एक परसेप्शन बना लिया। सोफिस्टिकेट आप हमेशा चाहते हो कि आपका बॉडी लैंग्वेज इज हाउ यू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपको पता है कि आपने 60 to 90% लोगों से बिना अपना मुंह खोले बात कर ली होती है थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज। एंड अ बिग पार्ट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज इज हाउ यू वॉक। आप जैसे ही किसी रूम में वॉक इन करते हैं ना, भले वो कोई मीटिंग हो, भले वो कोई क्लासरूम हो, कोई इंटरव्यू, भाभी के साथ किसी डेट पे जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, तो लोगों ने सिर्फ आपकी वॉक के बेसिस पे सबकॉन्शियसली आपके बारे में एक परसेप्शन बना लिया। सोफिस्टिकेट आप हमेशा चाहते हो कि आपका परसेप्शन जो है ना वो कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव पोर्ट्रे हो, लेकिन आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि यू हैव अ कॉन्फिडेंट वॉक, ये बताने तो मैं आया हूँ। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है वॉक करते हुए सामने देखना है। यू हैव टू लुक स्ट्रेट, क्योंकि अगर आप नीचे देखोगे ना, व्हेन यू लुक डाउन आप थोड़ा वीक अपीयर करते हो, आप थोड़ा इंटिमिडेटेड लगते हो, थोड़ा डर लगते हो, ऐसे लगता है कि आप लोगों को अवॉइड कर रहे हो, लोगों से आई कॉन्टैक्ट करना नहीं चाह रहे या लोगों से मिलना नहीं चाह रहे। तो इसलिए जब भी आप वॉक करो, आप कॉन्फिडेंट लगना चाहते हो वॉक करते हुए, तो वॉक सीधा देखते हुए और चिन को थोड़ा ऊपर रखना है, नीचे नहीं रखना, इधर उधर नहीं रखना, थोड़ा सीधा देखना। जो नेक्स्ट चीज आपने अवॉइड करनी है वो होती है डक फीट। अब डक फीट क्या होते हैं? बेसिकली आपके पाँव जो होते हैं ना, या तो वो बहुत ज्यादा बाहर होते हैं, आपके टोज बहुत बाहर पॉइंट कर रहे होते हैं, आपके हील बहुत ज्यादा साथ होती हैं, या फिर आप बहुत साथ चिपका के चलते हो। ये चीज आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे जो आपकी वॉक होती है ना वो खराब हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ, अगर मैं अपने मेरे पाँव भी बहुत मैंने टक फीट की तरह कर लिया, अब मैं जब ऐसे चलूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे शोल्डर्स पीछे गिरेंगे, मेरा पेट बाहर निकलेगा, मेरे बॉडी प्रोपोर्शन खराब हो रहे होंगे, मैं छोटा भी लगूंगा, थोड़ा मोटा भी लगूंगा, और जब वॉक कर रहा हूँ ना बड़े अजीब सी वॉक लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अब ये जो डक फीट वाली हैबिट होती है ना, ये आ कैसे जाती है? तो आपके बचपन में आके अम्मा अब्बा ने आपको बोला नहीं होगा कि बेटा सही तरीके से चलो, पाँव बंद करके चलो, या फिर नेचुरली आपके पोस्चर में कोई मसला होगा मेडिकल इश्यू की वजह से, जो आपको कोई मेडिकल प्रॉपर असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये आपकी बैड हैबिट ओवर द टाइम आ गई आपके साथ, तो आप इसको आप सही भी कर सकते हो। जब बुरी आदत लग सकती है तो अच्छी आदत भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। आपने ट्राई करना है, फीट को ज्यादा बाहर पॉइंट नहीं कर रहे, आप उनको स्ट्रेट करें और उसके साथ वॉक करें। इसलिए इट विल टेक टाइम, लेकिन आराम आराम से आपको अच्छी आदत डक फीट खत्म हो जाएगा और सही तरीके से वॉक करने की आदत लग जाएगी। तब भी आप वॉक कर रहे हो, आपके सामने कोई आता है या आप किसी के सामने से गुजरते हैं और एक नेचुरल आई कॉन्टैक्ट हो रहा हो, तो आपने उसको मेंटेन करना है, आपने उसको अवॉइड नहीं करना, क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो आप वीक लगोगे, आप लोगों की आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लोगों को अवॉइड करना चाहते हो। और हमें सोफिस्टिकेट्स ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो कोई अननोन पर्सन भी हो, भले वो मेल हो फीमेल हो, आपने मिनिमम 2 से 3 सेकंड एक नेचुरल आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। हर किसी स्माइल आपके फेस पे हो, आपने बहुत एग्रेसिव आई कांटेक्ट नहीं करना, बहुत देर तक आई कांटेक्ट नहीं करना, बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। आपने आई कांटेक्ट इस तरीके से नहीं करना कि अभी देख किसको ऐसे आगे फोड़ दूंगा, ये वाला
आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, एक नेचुरल अच्छा स्माइलिंग आई कॉन्टैक्ट करना है, क्रीपी आई कॉन्टैक्ट आपने अवॉइड करना है। लेकिन जब भी वॉक कर रहे हो कोई सामने से आए तो आई कॉन्टैक्ट जरूर करना है। तो नेक्स्ट चीज तो आप लोगों ने अभी तो खुद ही नोटिस कर ली होगी, मेरे में कोई डिफरेंस आपको फील हो रहा है, मैं थोड़ा सा वीक लग रहा हूँ, थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट लग रहा हूँ, क्या मसला है? मैंने अपने शोल्डर्स गिराए हुए, आई एम हंचिंग माई शोल्डर्स। आपको शोल्डर्स पीछे रखने हैं, भले आप खड़े हो भले आप वॉक कर रहे हो, कभी भी शोल्डर्स आप हंच नहीं करते, गिराते नहीं, क्योंकि जब वो करते हो तो आप वीक लगते हो, आप लेस कॉन्फिडेंट लगते हो। और ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि यार शोल्डर्स पोस्चर ठीक रख के इंसान को खड़ा होना चाहिए, वॉक करना चाहिए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात होती है कि बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे झुका के गिरा के चलते हैं। शोल्डर्स पीछे करो, चेस्ट को सीधा रखो, बैक स्ट्रेट रखो, चौड़े में खड़े नहीं होना, एक नेचुरल अच्छे पोस्चर के साथ खड़े होने और वॉक करना। अगर आप वॉक करते हुए बिल्कुल अकड़े हुए चलते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल रोबोट की तरह चलते हैं, तो वो बहुत अजीब लगता है, बड़ा नेचुरल लगता है। ट्राई टू रिलैक्स, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा लूज छोड़े, और जब वॉक कर रहे हो अपने शोल्डर्स को ना थोड़ा सा स्वैग करके, मतलब स्वैग नहीं तो शोल्डर को स्वैग करके, थोड़ा सा ना हल्का सा आपके जो वॉक है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट हो आपके शोल्डर। छोटी चीज हमें रियलाइज भी नहीं होती, लेकिन जब अपने शोल्डर्स को हम थोड़ा लूज छोड़ के थोड़ा सा स्वैग करके चल रहे होते हैं ना, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है लड़कियों को, औरतों को स्पेशली। तो मर्द जो वॉक कॉन्फिडेंटली करते हैं ना, वो चीज उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा स्टिफ होके कभी वॉक ना करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को लूज छोड़ें और अपने शोल्डर्स को स्वै होने। मेरे भाइयों, अगर आप उन लोगों में से जो वॉक करते हुए अपने हाथ अपने पॉकेट्स के अंदर रखते हैं और फिर वॉक करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब आप अपने हाथ अपने पॉकेट में डालते हैं तो आपके शोल्डर्स जो है ना वो अगेन वो नीचे गिरते हैं, वो हंच होते हैं। जब आपके शोल्डर्स हंच होंगे, जब आपके हाथ पॉकेट में होंगे, अगेन आप बड़े क्लोज ऑफ रखोगे, आप ऐसे लगोगे कि आप किससे बात करना नहीं चाहते, बड़े से ना आइसोलेटेड बंदे हो, कोई आपको सोशल इंटरेक्शन नहीं करनी, डरे डरे से लगते हो। तो इसलिए मेक श्योर जब वॉक कर रहे हो तो प्लीज अपनी पॉकेट से अपने हाथ निकालें, अपने हाथों को लूज छोड़े, अपनी बॉडी को लूज छोड़े एंड देन वॉक। इससे आप जब भी किसी के साथ वॉक कर रहे हो तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि आप क्या उसके साथ उसके बराबर वॉक कर रहे हैं या उससे पीछे वॉक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उसके पीछे वॉक कर रहे हैं ना, देन आप अपने आप को दिखा रहे हो थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट, सबकॉन्शियसली आप उस बंदे को अपने ऊपर डोमिनेंस दे रहे हो, और ये नहीं होना चाहिए। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो पास है वो बहुत तंग है, लोग बहुत ज्यादा है, रश है, तब भी आप सबको चीखते फाटते सबसे आगे जाके सबके साथ जाके चलना है, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर जगह हो और अगर आप एक दो लोगों के साथ, एक बंदे के साथ, किसी के साथ भी चल रहे हो तो उसके बिसाइड वॉक कर रहे हो, उसके साथ वॉक कर रहे हो, आपने जगह होते हुए भी पीछे वॉक नहीं करना। जब आप वॉक कर रहे होते हो आप स्टेप्स ले रहे होते हो, तो इसलिए आप किस तरीके से अपने स्टेप्स ले रहे हो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप ट्राई करो कि आप बहुत छोटे स्टेप्स है ना उनको अवॉइड करो, क्योंकि उससे लगेगा कि आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, आप वॉक भी आपकी कॉन्फिडेंट नहीं लगती। लेकिन जब आप थोड़े बड़े स्टेप्स लेते हो ना, दैट शोज कि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, एंड दैट शोज कॉन्फिडेंस। तो इसलिए आप जब भी वॉक करें थोड़े बड़े स्टेप के साथ वॉक करें, लेकिन बहुत बड़े स्टेप्स भी नहीं लेने। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप आर्मी के परेड कर रहे हो, नॉर्मल थोड़े से बड़े स्टेप्स लो। और ये चीज मैंने लिटरली नोटिस किया है। मेरा एक दोस्त है जैन, मुझे उसकी शुरू से ना उसकी वॉक बड़े मजेदार से लगती थी। जब भी वो दूर से भी चल रहा होता था पता चल जाता था कि जैन चलते हुए आ रहा है। और फिर मैंने नोटिस किया कि जैन जब वॉक कर रहा है ना तो वो थोड़े से बड़े स्टेप्स लेते हैं, इसलिए उसकी वॉक में इतना अच्छा लगता है। तो इसलिए इफ यू वांट टू वॉक विद कॉन्फिडेंस, ट्राई टू टेक बिग स्टेप्स। आपको लगता था कि आपको सही तरीके से वॉक करना नहीं आता, या जब आप वॉक करते हो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ मिसिंग है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद तो सारी टेंशन सारे मसले सॉल्व हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई चीज़ है, कोई इश्यू है जिस पे आप चाहते हो कि मैं बात करूं, तो नीचे कमेंट में बता दो। आपकी खिदमत करने के लिए तो हम हाजिर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब मुझे इजाजत दे दो। अल्लाह हाफिज़ एंड रिमेंबर, बी सोफिस्टिकेटेड। Right, friends, did you enjoy the video? Did you hear it properly? Yes. Right, so my computer's audio was off. That's the reason I was not able to share the other video. What will we do is we'll see the other videos also, since we missed upon on 2 videos because of the computer audio. I will share it right away. Just hold on. So it was a nice video. What was your comment on the video? कैसा लगा आप लोगों को? I liked it. It was, the person was so enthusiastic about telling his details on how to walk. I mean, the way he showed his video was also very good. Did you like it? Comments, please. Did you like it or not? Yes. Yes. You did? Good. Nice. Okay, let me play that previous video which was pending. Let me just play it for you. So where was that? Okay, first we learn how to do this engaging of our visiting card wala. Okay. Just a second.
Okay, I'll just share this video. Just hold on. Okay, let me know whether it's audible or not. सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है. No. Sorry? Audible. No, ma'am. Audible, ma'am. Audible. No, not audible, ma'am. Okay, just a second. Today, we'll review a situation Now is where it business... audible? As part of every business introduction, Yes, a ma'am. business card exchange Yes, follows ma'am. specific executive presence protocols. Your mastery of the business card exchange produces an immediate return on investment and moves your initial introductions to follow-up opportunities. Today, we'll review a situation where business cards would be exchanged. Tom, you're meeting a prospective client, Michelle, for the first time after getting to know her over the phone. Okay, now exchange cards. Michelle, so great to finally meet you. Hi, Tom. Delighted to Got meet you something too. for you. Yeah, my card. Oh, Here you go. thank you. And here's mine. Oh, Now let's point out where Tom went wrong. Tom aggressively thrusts his card at Michelle. Tom doesn't look at her card. He just puts it in his wallet. Tom's card is shabby and dog-eared. Michelle, you handled that well, but I think we can all agree that there were a few bloopers on Tom's part. Tom, let's try that again. Here are some guidelines. yes. I'd like to learn to do this properly. Okay, for starters, greet, shake hands. Hi, Michelle. I'm Tom. Great to meet you. Hello, Tom. Delighted to meet you. Now, Tom, reach into your inside jacket pocket. At an easy pace, present your business card face up so that it can be easily read. My card. Thank you. Tom, this time when Michelle hands you her card, look at it. Then put it back in the card case. Thanks. That was great. And just a final tip, always make sure your cards are fresh and clean. A card case is a great idea. And now, once more, on your own time. Hi, Michelle. I'm Tom. Great to meet you. Hello, Tom. Delighted to meet you. My card. Thank you. Oh, that's great. Nice logo. Thank you. And here's mine. Thank you. Your office is in a great location. Yeah, very close. Executive presence means more than presenting your business card correctly. It's not just business etiquette or looking and acting the part. It is far more than skills, ability, and talent. Executive presence combines leadership, communication, and engagement expertise in a powerful mix, leading to continuous upward mobility. Friends, did you see that? Was it a good video? We'll discuss all these videos together, okay? So there is one more to go, which we had mixed, which we missed. But you were able to see it properly, right? Yes. Yeah. We'll see this video as well, and then we'll discuss all the three together. Right, let me know if it's audible or not. Body language expert Leo is Is it back with audible? us now. You've already spoken about the royal Ma'am. wedding. We broke that down, but now we're going to break down the 5 steps to a power handshake.
Teach me. Step one. So step one is have you seen the Old West movies? Whoever wins the first one to draw usually. Yes. That's what we want to do. Okay. You want to be always the first one to offer the handshake. All right. Because then it allows you to actually have control over what's going to happen next. Okay, so the draw, that's one. The first one is a draw, right? Okay. The second one is we want to make eye contact and smile. All right. What happens when I smile at you, you tend to smile back. You can't help it, right? Now, I get some people get really creeped out about the way that I smile sometimes, but I try to smile naturally so that you can smile back and your brain then starts connecting with me right away. All right. The third step is very important. It's kind of weird. Because what I'm going to do is I'm going to draw, right? And I'm going to make eye contact, smile, and then what I'm going to do is I'm going to turn the hand upwards just slightly. Okay, so that's called the turn. It's called the turn, and what's going to happen is forcing you to put your hand on top of mine. I'm giving you the upper hand, but it's my choice to give it to you. All right, so let's do that again. So draw, smile, eye contact, and then I'm going to turn. Now, if we both turn, then we're not going to have that issue, right? But normally, you would put your hand on top of mine at that And point. the psychology behind that is like you're giving me the upper hand. Absolutely. And I know that I'm doing that. So that is important because I want you to know that I'm giving you the status that you deserve, now, basically. What about the match? That's number 4. So match is actually matching the firmness. We don't want weak handshakes. We don't want too strong handshakes. Right. So what I do is that when we shake hands with somebody, I'm going to wait just slightly for them to shake my hands to see how strong they're going to match or firm. And then I'm going to match that firmness as well myself. Okay. Now, the last step so the is... hard ones, because before we were talking about you don't want the really loosey-goosey one like you're kissing That's a right. royal person, but you also don't want the bone crusher. You right? don't, because you're going to leave a bad impression on both ends of that spectrum, right? It's going to be really weak or really strong. We want to just be gotta get that normal, happy somewhere in medium. the middle. All right, So, okay. but we want to try to match the other person And whenever then possible. the last one is This one's kind of invade. weird. Yeah. So normally, if you get too close to somebody, they get very uncomfortable, right? It's the space I'm invader. not uncomfortable at all. I call it hashtag space invader, right? So we don't want that. Space invader. And we know each other, so it's different. But I wouldn't get that close to somebody that I don't know. But with a handshake, I can actually do that. So, but the trick to do it is I'm going to get your hand closer to my body so that your brain feels, wow, this person's inviting me into a personal space that is normally reserved for other people. And earlier you were telling me you don't want to do the pull. I don't want to because pull. That's a bad So thing, here's right? what we're going to do. So Yeah. we draw, we smile, eye contact, we turn. So match the firmness. And what I'm going to do with the momentum that I have, I'm just going to get slightly closer to your body or to your hand. So your hand is closer to my body than yours is to yours. Okay. So that way your hand is in my personal space, basically. And what that's happening in your brain at that point is actually making it think, this person trusts me, so in return, I'm going to make myself trustful as well. Wow. All right, let's put it all together. 1, 2, 3, 4, 5. All right. 1, draw, smile, eye contact. Then we turn, right? So I turn in this case, but normally, and then we match the firmness. And then finally, the last step is I'm going to just invade the space a little bit. That's it. That's all we have to do. That's the best handshake I've ever had. Make sure you go to CBS19.tv for more information from Leo and just more great stuff. Does your child's heart race? Hi friends, did we see this video? Was it good? Okay, so Yes. now I would like to discuss all the 3 videos with you. So I would like you to put on your cameras and your mic so that I can understand किस को क्या समझ आया और कैसे आप इसको कॉल पे यूज करेंगे. एक सेकंड मैं पीपीटी का वो शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन. उसके बाद कहाँ गया पीपीटी? यो राइट. सो टेल मी क्या क्या समझ आया हमको इन वीडियोस से और हमें उसे कैसे यूज करना है. यस. What did you understand and how will we use it? Yes, Ankur. The first video was on what? It was on walking. How will you use walking in our calls as a relationship manager?
Ma'am, could you go back to the video so that I could recall? Now the screen, it's confident handshakes. Okay, I can go back to the slide, okay, because that video फिर से play करना बड़ा लंबा चौड़ा काम है. This was the walk. I think where it was. Here. How to create a positive aura. वो जो हमने walk के ऊपर देखा था ना, smile, grooming, वो वाला. That young man of Delhi who was, Yes. Gango about telling how to walk. Yes. So what did you understand in that? I would just brief it. First of all, it was about smile, because smile goes a lot way. It also shows that we have a positive aura of ourselves, positive vibes we are giving, and we are greeting the person. Yes. Secondly, about grooming, which we have already mentioned, because first impression is the last impression. It's an old saying, and the way we present, because a person will not know how we are or whether we are trustworthy or not. The first thing is always visual. So if we can present ourselves well, we gain at least the first step to approach them, and they'll be very welcoming. Secondly, the dressing comes in the same sense. We need to dress as PBRMs. We need to dress as a mature senior individual, like a formal, like a traditional formal attire, which is acceptable in the corporate, which is a suit, a tie, a belt, which goes along with the shoes, and trousers. No jeans or chinos. Nothing which indicates something casual. Then interacting with the customer, it's always good to maintain an eye contact, because that helps in gaining trust with them. If we look around here and there, they might think that we are not interested in the person, not that we are trustworthy. Then the body language, like I'm leaning forward right now, shouldn't be like that. It always should be straight. Should have a commanding position, and by psychology says itself, even if we are not confident, we should sit in a straight posture. So by default, that sends signals to the brain, which says that you are being confident. Right. Absolutely. Then- Correct. Yes, punctuality, which personal experience I've learned in Mizoram. Like when I was training there, when I said 10 o'clock, everybody was present at 10. Like 9 means 9, 10 o'clock is 10. No 9:50, 9:59. So that should be maintained. It shows that we are always maintaining our commitments on our deadlines. And if we can show that in our first visit of being punctual, then they will know that whatever queries they have, we will give them on. We'll reply them on time. Right. That will develop a lot of trust in them. True. Yes. True. Secondly, the confidence, because if we do not have confidence in ourselves, we won't be able to have the customer have confidence on the bank or our products. Or rather, they will surpass us and go to someone else in the bank itself. So for our own growth also, it's very good to have confidence. But for that, I think we need to have proper product knowledge, and whatever preparation we have should be on point before meeting the customer. Absolutely. So that covers the knowledge itself also. And I think I was digressing for the thing. The walk was also very important. Our walk should be in a proper way. Shouldn't be the feet shouldn't be, if I recall, the feet shouldn't be too wide or nor should be too narrow. It should be a normal corporate walk, like the one they showed in the video. Shoulders should Is not it be enough? in the front. They should always be back. Okay. Straight Correct. shoulders is Straight what he shoulder. said. Yes. Yes. Right. Very good. Very well summarized, Ankur. I'm really impressed. Very, very good. Are you a student of psychology? No, my sister is a psychologist, so Oh, she keeps she is a telling. psychologist. I Okay. do Okay. follow Dr. Peterson. So Oh, John, that's really nice. yeah. Actually, it's an interesting world. In fact, when I, moved out of my banking career, I did my master's in psychology. Really nice things you get to learn. So yeah, good. Okay. So very good, Ankur. Thank you so much on a brief on the video. So friends, do you all agree with what Ankur told us about the video? It showed us how to walk. It showed us the confidence. It showed us the knowledge level. Yes, ma'am. Yes, Preeti, very good. He deserves a clap for the explanation. You are absolutely right. He really explained well. Rajesh, thanks for the clap for Ankur. Ankur, everybody is clapping for you since you explained it very well. Thank you, everyone.
Thank you, everyone. So we have a really motivating friends team here. And it's really nice when you receive a clap. Now you feel good because virtually we can do that. Otherwise, I would have given you a chocolate in a physical class. It was a nice You said reply. that, that's enough. Thank you. Right. Okay, so there was one more thing which we had discussed in our video. Who will explain this video? Visiting card वाला. क्या सीखा हमने इसमें? इसमें कुछ points दिए? Yes. Okay. What did you see here and what did you understand? Who would like to speak about this? Anybody, whoever wishes to, or else I'll pick and choose. Yes, Nitesh ji, बोलिए. Nitish ma'am. Kumar, yes. Please switch on your video. It would be good to see you. It's always good to see a face, when we are talking. But internet ki wajah se we have to switch off at times. But in this conversation, at least we can for 2-5 minutes switch on. Yes. Yeah, I can see you. Yes. हमें हमेशा कार्ड को क्लीन रखना चाहिए और जब भी हम कार्ड को कस्टमर को देते हैं दोनों हैंड से देना चाहिए और फेस और जब कार्ड्स हम ले रहे हैं कस्टमर से तो राइट हैंड से लेना चाहिए या दोनों हैंड से लेना चाहिए और जब हम उस कार्ड्स को लेते हैं तो कहीं अच्छे कार्ड्स फोल्डर में रखना चाहिए जिससे कार्ड्स कहीं पे आपका वेस्ट ना हो या गंदा ना हो जाए. करेक्ट. So to always give it with 2 hands like this, झुक के दें. जब भी कस्टमर सामने खड़ा है बहुत ज्यादा पास में भी ना जाए, पर एट द सेम टाइम अगर वो बैठा है अपनी टेबल पे या खड़ा है टेबल के अक्रॉस या पास में, दोनों हाथ से पकड़ें, झुक के तहजीब से दें. तहजीब से उसका काट लें. जनरली वो भी 2 ही हाथ से पकड़ाएगा, पर अगर वो 2 हाथ से नहीं पकड़ा रहा, 1 हाथ से पकड़ा रहा है या जैसे भी, आप या राइट से या दोनों हाथ से इज्जत से लें, क्योंकि वो उसका नाम है, उसका एड्रेस है. और उसको जरूर देखें और उस पर कमेंट करें जो भी. राइट सर, दैट्स योर नेम. या राइट सर, यू आर एट सच अ सीनियर पोजीशन. वाओ सर, योर ऑफिस इज एट सच अ प्लेस. सर हो सके तो अवॉइड करें. अगेन जगह का डिफरेंस है. जैसे कल किसी ने बताया था कि बंगाल में सर बोलना इज लाइक कंपलसरी. कई जगहों पे नहीं होता, तो जैसी जगह उस तरह से बात करें, बट बहुत ही स्माइलिंगली दें, स्माइलिंगली लें और लेके एकदम अप्रिशिएट करें कि वाओ सर या वाओ मैडम. Whatever comes to your mind, whoever is in front of you, right? So, and keep it safely in your visiting card wala. It should be a different visiting card holder. It should not be the one your wallet mein thusa nahi hona chahiye, right? Ladies and gentlemen, do you agree with this? Okay. Next, we also saw a video on handshake. Okay, who will tell me about this video? Yes. Anybody who would like to volunteer? What did you learn about handshake in the video? Anyone? If you volunteer, it's good, or else I'll have to pick anyways. Okay, since everybody, yeah, somebody has volunteered. Yes. Yes, good. Hello, ma'am. This is Vrindavan Manthi. Yes, Vrindavan, I can see you. Thanks for volunteering. Yes. Tell me. मैम ये जो आर्म सोल्जर को हम जो वॉलंटरी करेंगे और सेकंड करेंगे तो उसमें क्या है ना, थोड़ा जैसे कि रेक्टेंगल पोजीशन में हम करेंगे, नहीं तो ऐसे हाथ को 2-3 बार मतलब सेकंड नहीं करेंगे. एक बार उसको पकड़ के ठीक तरीके से ऐसे हैंड करेंगे जैसे कि उनको फील है कि ये जैसे कि ऑफिशियली सेकंड है. और दूसरी बात है, जब हम उनके सामने बात करते हैं आई कांटेक्ट टचिंग रहना चाहिए, जैसे कि हमारा आई और हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा आई से मिलता जुलता रहता है. जैसे कि हम कुछ बात करते हैं, हमारा हाथ इधर उधर हो रहा है, तो हाथ को ऐसे करना है जैसे कि हम जो बात करेंगे उसी तरह से हाथ को हमारा, इस हिसाब से कस्टमर जैसे कि जान पाएगा हाँ ये ऑफिशियली as per the discussing both are customer and me. हेलो. अगर आप एक लेडी कस्टमर से मिलते हैं, नो शी इज वेरी सीनियर, आप किस तरह से हैंडशेक करेंगे या करेंगे भी कि नहीं करेंगे? तो पहले मैम मैं विश करूंगा एज ए ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम,
उसके बाद मैं पहले मतलब उनको कंफर्टेबल लगने से मैं पहले, जैसे कि हमारा यहाँ पे भुवनेश्वर कटक उड़ीसा में प्रणाम बोलते हैं, तो ऐसे करेंगे। नहीं तो हाँ, हाथ जोड़ेंगे। नहीं तो उनका गेटअप और उनका मतलब जो एनवायरमेंटल है वो आसपास वो कैसे मतलब दुनिया में रहते हैं, इसी हिसाब से हम उनको सेकंड करेंगे मैम। Right. So if she's a corporate person, you might do a handshake. If you feel that she is into a, a business wherein, pranam से काम चलता है या pranam would be preferred, तो आप हाथ जोड़ेंगे, right? मैम एक्चुअली क्या होता है ना मैम, यहाँ से 45 से ज़्यादा हम एज से हम लेडी से मिलते हैं, तो क्या होते हैं जैसे कि लेक्चरर या स्कूल टीचर या, तो उनको प्रणाम करना ही यहाँ पे शोभा देता है। नहीं तो जैसे कि 35 एज से या 30 एज से अप टू 50 एज तक जो हम लेडीज मिलते हैं, लाइक कॉर्पोरेट है, जैसे कि मैं एक एक्सिस बैंक में हूँ और दूसरे वो कॉग्निजेंट कंपनी में है या कोई टीसीएस में है, तो उनको हम सेकंड की तरह से उनको ग्रीटिंग करवाएंगे। Absolutely right. That's how you do it, Situation के हिसाब से एक आरएम को सोचना चाहिए, ठीक है ना? जहाँ पे हैंडशेक लगेगा वहां पे हैंडशेक करोगे। हैंडशेक अगर लेडी को करोगे तो बहुत ही सॉफ्ट, योर हैंड शुड बी ऑन द डाउन, यू टू टेक हर हैंड सॉफ्टली एंड जस्ट शेक इट, नॉट लाइक अ मैन वेर यू आर जस्ट पंचिंग द हैंड एंड डूइंग अ शेक हैंड। फॉर अ लेडी इट शुड ऑलवेज बी लाइक दिस, ओके? डाउन, आपको नीचे हाथ देना है और वहीं पे देना है जहाँ पे लेडी कंफर्टेबल है। अगर लेडी कंफर्टेबल नहीं है तो राइट, एब्सोल्युटली इस तरीके से, है ना? एंड जहाँ पे लग रहा है कि नहीं यहाँ पे शील नॉट बी कंफर्टेबल, वहां पे हाथ जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको शेक हैंड करना है। सेम अप्लाइज टू आवर मेल कस्टमर्स वेयर फीमेल कस्टमर्स आर आरएम्स, ठीक है ना? सो बहुत सारे ऐसे मेल कस्टमर्स के पास आप जाओगे, मेरे करियर में बहुत ऐसे मेल कस्टमर्स के पास मैं गई हूँ जो आपकी तरफ देखते भी नहीं है ना, उनकी आंख नीचे होगी, वो आपसे बात कर रहे होंगे जस्ट बिकॉज आई वॉज अ लेडी आरएम और मैं जिससे भी मिल रही थी, कई कस्टमर्स होते हैं टिपिकल टाइप के, दे डोंट लुक एट यू, सो देन you should not feel offended, my dear lady friends here. It's okay, there are natures of people in India and you cannot change it, but we need that client, है ना? हमारे लिए वो client जरूरी है। तो आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपसे हाथ नहीं मिला रहा, ठीक है, आप उसको नमस्ते करके बैठ जाइए, आप अपनी बात कीजिए। अगर वो आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप कोई भी ऐसा टॉपिक करिए कि वो ब्रेक ऑफ आईज हो जाए, वो थोड़ा सा मुस्कुरा दे। एक बार वो मुस्कुरा दिया ना, वो आपकी तरफ नहीं भी देख रहा है, तो आपको एक हिंट मिल जाती है कि वो आपको सुन रहा है, ठीक है? सो देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स हु विल नॉट डू आई कॉन्टैक्ट जस्ट टू शो दैट ही इज वेरी बिजी और ही डजंट बिलीव इन लेडीज और ही डजंट बिलीव इन जेंट्स। मतलब शी डजंट बिलीव, कई बार लेडीज भी ऐसी होती हैं, बहुत सीनियर होती हैं, they'll not look at you, they'll be like, हाँ बोलिए क्या बोलना है, and they'll be doing their own work. So don't get offended, part and parcel of our jobs, okay? We have to take this, बोलते ना कस्टमर सर आंखों पे, तो सर आंखों पे ये सब लेना है हमको, हमें वो कस्टमर चाहिए, उसका पैसा चाहिए, वो एमडैप काम आएगा, कस्टमर का ईगो सेटिस्फाई करना है, जो भी बोले हमको वो एमडैप से मतलब है, अपने ईगो मत लेके जाना, ठीक है? इट्स अ कस्टमर, वी आर नॉट बिल्डिंग अ फैमिली रिलेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है? राइट एवरीवन, विद मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबको समझ आया कहाँ कहाँ पे हाथ मिलेगा, कैसे मिलेगा? मी जोन में नहीं जाना है किसी क्लाइंट के, डोंट गो टू द इंटीमेट जोन, पास में मत जाना क्लाइंट के, थोड़ा दूरी। हैंडशेक मतलब हैंडशेक जितनी दूरी होनी चाहिए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, ऑपोजिट सेक्स वाले भी मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए एक फीमेल आरएम जा रही है मेल के पास या मेल आरएम जा रहा है फीमेल क्लाइंट के पास, अकॉर्डिंगली सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसा क्लाइंट है, जैसा माहौल है। वेरी नाइसली सेड बाय मिस्टर मोहंती कि कई क्लाइंट्स होते हैं जो हाथ जोड़ना प्रणाम पसंद करेंगे, कई क्लाइंट्स होते हैं जो शेक हैंड पसंद करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द माहौल ऑफ द क्लाइंट यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, राइट? ओके, थैंक यू सो मच मोहंती जी, थैंक यू मैम। Right, so moving further, yes, so we have covered till here. Are you all able to see this slides दिख रही है ना? We have done till here, introducing others. We have done how to build a rapport, how to create a positive error. यहाँ तक दिख रहा है सबको? Is the slide show visible? Yes, ma'am. जी मैम, yes मैम। Right. So remember the elements of creating the first impression, high standards of grooming and hygiene,
Positive body language, handshakes, postures and gestures. And internal is your confidence, your knowledge and your voice tone. ठीक है? तो externally आपकी looks, आपका aura, आपकी perfume, आपकी language, आपका handshake, आपका posture, आपकी grooming, आपके nails कैसे कटे हुए हैं, आपके बाल कैसे बने हुए हैं, सब external है. Internal है आपका confidence, आपकी knowledge, आप कैसे बात करते हैं, आपकी क्या tone है ना? कोई लोग बहुत गुस्से से बात करते हैं, कोई लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, कोई लोग बहुत स्माइलिंगली बात करते हैं. चलता हुआ आदमी है जो बहुत स्माइलिंगली बात करे, ठीक है ना? हर आदमी की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है और उसके पास 100 चीजें करने को हमारे अलावा, ठीक है ना? आप एक सिर्फ बैंक से आए हैं, उसके पास ऑलरेडी एक बैंक है, पर हमको उसको कन्वर्ट करना है, हमारे को कन्वर्ट करना है, राइट? हमारा काम है. सो रिमेंबर ऑलवेज टू गेट दैट client, you have to keep that smile, you have to maintain that patience. ठीक है? Be smiling, be patient with the client and he will come to you. ठीक है? Okay. So sales is a business of rejection. That's what I've been telling you. Don't get bogged down. Do not let sales rejection bog you down. Win over your fears. You will be bogged, मतलब बहुत ज्यादा जगह rejections भी होंगी, बहुत ज्यादा जगह प्रॉब्लम्स भी होंगी, इतना इजी नहीं होता. But don't get bogged down. What if I don't make a great impression? Prepare for a great first impression. Show credibility in you, your bank and your product. Keep preparing, keep practicing. होगा, 100% होगा. Why do I get rejected so many times? Can come to your mind. Rejection is not for you. It just doesn't meet customers' need at that point. So ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, जरूरी क्या, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. उसको उस समय बैंक की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दूसरी बैंक से वो फैसिलिटीज अवेल कर रहा है. So attempt again, don't give up. With each cold call, your confidence and understanding of the customer will improve. What if I come across as pushy? Focus on the customer, not your product. ठीक है? So, I would quote one example here. When I was working as an RM, I, went to a textile market, okay? And it was a big textile market where the shops are very, very costly. So every owner there, obviously, have you ever seen a textile market? Small shops, बहुत सारा टेक्सटाइल पड़ा होता है, लेबर यहाँ से कपड़ा उठा के वहां रख रहा होता है, जो मालिक होता है वो बैठा हुआ इन्वेंट्री ले रहा होता है, होलसेल और रिटेल में बेच रहा होता है, एंड उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होती है. मतलब ये एक ऐसा ऑफिस नहीं होता जहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट है और ओनर की केबिन है, उस तरीके का नहीं होता. इट्स मोर ऑफ अ बिग शॉप. एक शॉप जिसमें 2 बड़े रूम्स हैं जहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है, उसके पीछे उसके लेबर काम कर रहे हैं और उसके पीछे ही एक छोटी सी जगह है जहाँ पे टेबल चेयर रख के ओनर बैठा है. जनरली ऐसा होता है टेक्सटाइल मार्केट में. But these people are very rich, super rich. So I ended up getting there because clients, the target was that we wanted to build NTB clients. And believe you me, it was probably, a very busy day. And, every client was like, please jaiye, kind of aage badho, we don't want to talk to you. And in that situation, to keep up that tempo of not, missing out ki chalo theek hai, ho gaye 5-6 client और नहीं करने, नहीं, I'm not able to do it today. Maybe it's not a good day. It comes to your mind so badly that you actually feel like going back, and doing some other work. So that should not happen. I remember it was a very hot day and we were doing these calls. We met 5 clients, all rejected. Literally meaning chucked out of the office. Please get out. We don't need you. That kind of humiliation. Okay. And still, that tempo of, no, we have to do at least 1 client here. So, what makes you come back into mood is eat something, get fresh, thoda kuch khao piyo, badhiya sa. Talk to some good friend, not related to banking. Okay. Thoda fresh ho jao 10-15 minutes and then go back and start again. Give it a fresh start. We actually, in that entire day, by the end of the day, clicked 3 big deals. These were really big deals.
One person wanted a current account, the other person wanted a life insurance, and the third person was cross-sold a very big portfolio, a PMS scheme. So, that's how it is. So don't get disheartened. Just keep doing it. Cold calls are cold calls, okay? They can be, a gold mine. So you can actually get a lot of gold and diamonds, but at times after a lot of rejection. So don't worry. It's not that everybody is ready early in the morning for you to open an account, right? They also have their work. So you might get rejected, you might get humiliated, on jao jao tumhare jaise bahut aate hain would be something which will be very, very common in clients. But don't get disheartened, okay? Cold calls are the way to go to build up your NTB, right? I hope you could relate to the example I gave you. This is a real life example of my own. So yes, but yes, always remember, don't be pushy. The last line which it says is, you should focus on customer, not the product. Okay? Because every customer would have different requirement at that time. The only thing you have to go and tell to a customer is, Isa, I have come, sir or madam, if it works there, or I have come from Axis Bank and I work as a senior relationship manager there. This is my name. And I wanted you to start a relationship with my bank because I feel you are that customer who should get the proposition which this bank offers. I have worked with so many banks. If you have, or I have experience of so many years with affluent customers. And I know that, customers like you would really enjoy the benefits this bank offers, my bank offers. And then, don't talk about product. Focus on what he does. So, sir, can I know about your business? Can I know about your current, what is going on in your life currently, in your business, or, whatever he shares. Right, friends? Okay. Moving ahead. Develop a positive mindset with practice. Say this aloud every morning. I am made to win. Right? When you move from your home, dress up. एंड आफ्टर ड्रेसिंग अप जब आपका बैग रेडी हो जाता है जो आप कार में रख के कॉल पे ले जाते हो, जस्ट से आई एम मेड टू विन, आई विल मेक दी मोर क्लाइंट्स, आई विल डू इट, राइट? डेवलप 3 कैरेक्टरिस्टिक्स विद प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, वॉइस एंड टोन. नॉलेज बहुत जरूरी है आपका, कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, वॉइस एंड टोन भी जरूरी है. वॉइस एंड टोन कैसे आएगा? खाते पीते रहो, डोंट गेट एग्जॉस्टेड, बिकॉज सी दिस RM जॉब इज मोर ऑफ अ मार्केट थिंग, ओके? So it, because of different seasons, आप बारिश में भी बाहर होगे, आप गर्मी में भी बाहर होगे, सर्दी में भी बाहर होगे. Always ensure to carry some food with you, a little chitbit here and there, maybe some, dry fruits, some water, some juices, which keep you pump up on energy. Okay. So voice and tone वहां से आपकी अच्छी हो जाएगी. Keep a smile. नॉलेज आपको आपके प्रोडक्ट्स अच्छे से पढ़ने हैं. यू शुड नो ऑल द प्रोडक्ट्स वेरी वेल सो दैट व्हेन द कस्टमर आस्क्स यू, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं अपने सीनियर को पूछ के बताऊंगा. आपको बोलना आना चाहिए बहुत अच्छे से टू इम्प्रेस हिम. एंड कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट you are a senior resource of the bank and you have come to meet him, right? So please ensure to do these small little things. अपनी कार को RM रेडी करके रखो. Daily habits that will help you win. Keep your numbers or targets pinned to your decks for daily recall. Aim big. Take small steps, domino effect. Don't procrastinate. Do it now. ठीक है कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, अभी करो. एक डायरी रखो. एवरी मॉर्निंग यू हैव टू राइट इन दैट डायरी कि आज आप किस किस को मिल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, एंड देन पिन दैट नंबर ऑन योर, इफ यू हैव अ नोटिस बोर्ड ऑन योर डेस्क. और एल्स एवरी डे डायरी, सुबह में आपने जो प्लान किया था डे एंड पे आप उसको टिक करके निकलो घर के लिए, क्योंकि ये प्लान किया था, ये हो गया, ये कल के लिए, राइट? सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्लान एंड डू इट. Next, qualify your suspects. Identify and qualify potential customers who have a need or interest in the products or services that our bank is offering. Classify the prospective customer in 3 categories: hot, warm, and cold. Hot is who is excited about your product and are likely to do business in near future. Warm are fence sitters. They want the product,
but are non-committal. They don't want to say no because they don't want to lose out on something good. So these customers who are warm, they'll keep posting, postponing the transaction. कि आज मुझे कुछ काम आ गया है, आज मेरी एक मीटिंग है, कल कर लेते हैं, and all that. So they keep doing that with you. So warm customer को hot करना आपका काम है, cold customer को hot करना आपका काम है. Cold customer होते हैं जो बिल्कुल excited नहीं होते हैं आपके product को लेके. They're completely indifferent. They require a lot of effort to be sold. तो cold customer पे काम करने के लिए थोड़ा time लगाओ. अगर आपके पास already pipeline में warm customer है और hot customer है तो सबसे पहले hot customer पे time लगाओ, फिर warm पे. Cold पे थोड़ा सा slow चलो because what happens is कि आप इतना टाइम वेस्ट कर दोगे और वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा. ठीक है. Sales pre-qualification suspects. Banta. What is Banta? Banta is budget, authority, need, timeline, and action. Questions for pre-qualification can be around budget, authority, need, timeline, and action. That's Banta. So budget is, can the customer afford our product? Or simply isn't willing to spend, avoid chasing a likely dead end. ठीक है. Can the customer afford our product? मतलब हमारे बजट के हिसाब से क्या ये कस्टमर हमारे सेटअप में बैठता है, और ही सिंपली विलिंग टू स्पेंड, अवॉइड चेजिंग लाइकली डेड एंड. ठीक है. तो कई बार कस्टमर खाली हमें चाहता है कि भाई ये बंद करें, मुझे फॉलो करना, तो कुछ भी बोलता है वो. अथॉरिटी इज द प्रोस्पेक्ट द डिसीजन मेकर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि हम ओनर से मिलते रहते हैं, है ना, कि भाई सर हमें मालिक का अपॉइंटमेंट दे दीजिए, हम मालिक से मिलेंगे, और पता पड़ता है कि सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या अकाउंट ओपनिंग डिसीजंस अकाउंटेंट लेता है. ही इज द पर्सन हु इज अ डिसीजन मेकर हियर. एट टाइम्स इट हैपेंस, मोस्टली बड़ी कंपनीज में ऐसा ही होता है. तो अथॉरिटी कौन है, जो जिसको पटाना है वो कौन है, वो जानना बहुत जरूरी है. और विल दे हैव टू कंसल्ट हिज फैमिली. सो कई बार फैमिली मेंबर्स को भी वो लोग कंसल्ट करते हैं, लाइक अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना है या कोई फंड में इन्वेस्ट करना है, तो is the family decision taken or the person whom you are meeting is the right person. Need. Does the suspect have the problem that your product can solve? So that need creation. Timeline. Assess the urgency of their time frame. Ask how quickly they want to address their issues. Action. Is the prospect ready to take action or asking questions that signal eagerness to act? Use the BUNT suspect qualification process to weed out inadequate prospects. Focus on leads who have a high probability of making a purchase. ठीक है, जो hot है, जिनकी probability ज्यादा लग रही है, उन पे focus करो. Use BUNT to access this case. Okay, you will have to access this case. Tell me where this client stands. Ashish, the director of ACT Private Limited, a small precision valve manufacturing company, one of your existing customer referred you to him. You are meeting with Ashish. Ashish shared the ACT as a banking relationship with HDFC Bank, and they have taken 2 crore working capital limit from the bank. You inquire how long they have been in business, how has the company been performing. Ashish shares that the company has been reporting loss for past 2 years due to COVID impact, and now looking for another bank to take over that loan. Assess using BUNT if he is a good suspect for you to pursue. Okay. Think on this and tell me what would be the response here. Who would like to try this? Can you see the screen and the case study? Can you see the screen and the case study, friends? Yes, ma'am. Yeah. So who would like to respond here? Where would he stand in the BUNT case? कहाँ पे stand होता है customer? Should we? Is he warm, hot, cold?
What do you feel? Yes, Preeti. It's hot, like because he's in need right now. So he himself is asking for, looking for some bank to take over that loan. Right. And where does he stand in the Banta thing? Need, ma'am. Right. Absolutely. Yes, you are right. Okay, very good job done, Preeti. Let's go to the next case. Bhumika is a founder of a small chartered accountant firms with a turnover of 2.5 crores. She has 10 employees in a small office. She holds current account with SBI with an average quarterly balance of 6 lakh. Her husband is a partner in her firm. Bhumika travels frequently, has customers across different cities of India, has a few corporate customers too. She is looking for working capital for business expansion. She has asked for timeline for getting the advances and a quick action. She has also requested brochures of current account related to products and offers. Tell me, where does this client stand? Hot, cold, warm? Hot. Correct. And where does she stand in our situation, Banta? Need. Timeline? Yes. Need plus also action Okay. because she has already requested brochures and she wants Uh-huh. to know the product and offers, and she has a limited timeline to cover it because she's in urgent need of that kind of working capital, right? Right, Okay. ma'am. Now we'll go Yes, through ma'am. probing and managing objections. Okay. As you enter the prospectus office, you need to, as you enter the prospectus office, you need to state why you have come here and the transition into business conversation smoothly. How can you do that? Walk in with confidence, project your aura. ठीक है, smilingly आप अंदर आ रहे हैं. Good morning, ma'am. You have a very impressive office. ठीक है? So you have a very impressive office is the first comment you generally do. My branch is nearby and I had been wanting to visit your office. I am Sumi, a priority relationship manager from Axis Bank. If you have a few minutes, I have a few quick questions, right? A good way to start the conversation. Very nicely, she has started the conversation. Let's see an example. Okay. Present the product at the point of need. Good morning, Ravi. My name is Vikram and I am a priority relationship manager from Axis Bank. Okay. Our branch is quite close to your office. You may have noticed. ठीक है, यहाँ पे sir madam नहीं बोला, Ravi बोला. This is what generally is done in Maharashtra and all these cities where people tend to prefer being called by name. Okay. Hi Vikram, what brings you here? I wanted to meet you to understand how we could help you manage your banking investment needs, for you and your organization. Before I begin, I would like to know a few details. Yes, sure. Go ahead. That's what Ravi says to him. Then Vikram says, can I get to know a little bit about your organization, you and your family? On that, Ravi says, Hariom Printing Works is the first generation business of them. And we are into this business of printing. We have a turnover of 3 crores, and the business is 5 years old. I have 5 members in my family, parents, wife, and 1 daughter. Wow, it's really great to know that. What is the constitution of the company? ठीक है, तो इस पे विक्रम बोलता है कि मेरे को अच्छा लगा ये सब सुन के. मुझे ये बताओ कंपनी का constitution क्या है? So on that, Ravi says it's a proprietorship firm. May I know who are you currently banking with and what are the services and benefits which you utilize both for your business and individual needs? He says, I have a current account with SBI and have been banking with them for past 5 years. And our family members too have our savings account in SBI. We do some investments in mutual funds and equities through separate account in HDFC Securities. ठीक है, तो उसने बताया कि वो SBI के साथ है, थोड़ा बहुत उसका HDFC Security के साथ इन्वेस्टमेंट है. What is typically the average balance that you maintain? So इससे हमें क्या पता पड़ेगा कि क्लाइंट हमारे लेवल का है कि नहीं.
about 6 to 7 lakhs, and we require high amount of cash deposits. Our savings accounts are usually for personal use, where we put our savings and some fixed deposits. So he says now what he has found out that this client is our range client. So now he's all in the good mood. So what does Vikram say? Excellent. Do you have a relationship manager from SBI managing your relationship? No, we deal with a branch manager. That's what Ravi says. Do you travel often? For holiday? Yes, I mostly travel to Mumbai and Chennai. For business, I do travel to Indonesia and Thailand, as have a few large customer bases there. Right? From what you have told me, so far, I feel at Axis we can provide you with an excellent banking solution for affluent customers like yourself for both your business and family banking needs. Our priority banking program is a premium banking program, especially designed to help you get the best banking along with finest experiences. I would like to understand this better. Why should I shift my bank? So then he gives all these reasons कि क्या-क्या reasons से उसको बैंक शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने उससे क्या-क्या पूछा था, बैलेंस का पूछा था, फिर उसने पूछा कि आप ट्रैवल करते हो तो ऑब्वियसली ट्रैवल लाउंज का बता सकता है, फिर उसने उनको ये भी पूछा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, तो उसने कहा था HDFC सिक्योरिटी में है, तो फिर वो एक्सिस डायरेक्ट के बारे में बता सकता है, इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी के बारे में. So he gets all this draft from the questions which he has asked, right? And hence, because उसके questions का आंसर दिया तो इंटरेस्टिंग साउंड किया क्लाइंट को. So then on this, he says, I would like you to go through our brochure. I'm sure you will like the priority banking program. Our account opening and